तो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अ वेरी वार्म वेलकम। आपका दोस्त आपका होस्ट वरुण आ गया है लेकर अपने दूसरे V2 पार्टनर को विभोर को एंड इट विल डेफिनेटली बी एन अमेजिंग अमेजिंग कन्वर्सेशन टुडे। आज बहुत सारी और बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी खुलासे होंगे बट एक चीज मैं फिर से सम हाउसकीपिंग टिप्स one second. Okay, yeah, so some housekeeping tips for sure, which is uh, प्रॉमिस तो मैं हमेशा करता हूँ कि लिमिटेड टाइम के लिए रखेंगे एंड ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम आई एम रियली गोना मेक श्योर कि आप सबके क्वेश्चंस जो थे वो एड्रेस हों। बट मोर देन द क्वेश्चंस, we will have a special guest. We are just waiting for her. She's having some kind of technical difficulties, but at the same time, जैसे ही उनकी technical difficulties resolve होती हैं, she will be here. Um, एंड हो सकता है कि शायद उस टाइम के लिए मुझे ऑफ जाना पड़े एंड मे बी आई हैव टू हेल्प हर, बट वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। वी विल ऑल्सो कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट कल के, जस्ट टू काइंड ऑफ समराइज यस्टरडे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कल भी आपने कुछ विभोर को पॉइंट कर रहे थे कि ही डिड नॉट रिवील एनीथिंग या ही डिड नॉट से एनीथिंग। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कल इतना बड़ा खुलासा हुआ था, इतनी सारी चीज़ें बताई गई थी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो अहेड वॉच इट, यूट्यूब पे पड़ा है। इट वाज अ वेरी स्पेशल वन एज वेल, क्योंकि कल हमने वी वेंट इनटू द स्पिरिचुअल साइड एज वेल। स्मिता जी ने ज्वाइन किया था एंड वी वर रियली फॉर्चुनेट टू हैव other guests join as well, and there were about 2 lakh people who joined with us live for that puja, for that chanting that happened. Anyways, कल का शो के बारे में, और you can always go back to the YouTube video या Facebook पे भी है। बट आज again we are gonna reveal something, or Vibhor is gonna reveal something which is gonna be really shocking, जो शायद आपके में से बहुत सारे लोगों को हम में से कई लोग ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स में, बट कई बार बोलने का झिझकिचाते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसको ही आई थिंक हमें चेंज करना है। वही एक चीज़ है जो भी बहुत बड़ी देर से इन इन सारे लाइव से डिस्कस करके बता रहा है आपको कि इट्स टाइम वी स्टार्ट टॉकिंग, इट्स टाइम we start discussing and bringing all these issues in front. ऐसे नहीं चलेगा कि आप लोग एक्सपेक्ट करें जादू से सिस्टम अपने आप चेंज हो जाए। सिस्टम चेंज करना है तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा, आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स विभोर, पहले तो वेलकम एंड गुड गुड मॉर्निंग मेरे लिए और गुड इवनिंग आपके लिए। आप म्यूट पे हैं विभोर। ओके, लेट मी अनम्यूट यू, गो अहेड। you muted me, right? यस आपके डिस्टरबेंस आ रही थी, सॉरी। गो अहेड। So, first of all, very good evening to my partner in crime and to all the SSRians and friends all over the world, not only in India, US. I mean, we were having our analysis, Varun, more than 146 countries are looking at our videos, and that is huge. That is very huge. इस बार तो आज we are also making a lot of more records, I would say. जैसे कल 2.2 lakh people were watching live. That is huge. That is really really huge. I've never expected that. Very huge. Yeah. And more than that, right? It's not about the views. It's not about कि हमें क्या YouTube पे Facebook पे लोग देख रहे हैं. It's all about कि कैसे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। That is why I must say that it's not only about being on live on YouTube. The all day 24/7 we get thousands of messages, you and me. We are like going crazy out there. मतलब कितनों को रिप्लाई करें, कितनों को ना रिप्लाई करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम. We are on these 5 apps basically, and the collective messages that we get on these 5 apps is more than 5,000 per day. More than that, I would say. मैं More than that. मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनली, मेरे को 5,000 से ऊपर. And you know what? Yesterday I slept at around 3:30.
after seeing all the messages and replying all of them. And at 6:23 p.m., I got a call from a 20-year-old kid who was very much terrified from a dream that he saw me killed like Gulshan Kumar. Oh wow, really? He waked me up, भैया आप safe तो? मैंने कहा क्या हो Wow. And such is the blessings and love of people that we both are Mm, getting, and I'm so overwhelmed. And absolutely. yes, you are right. The today's revelations would be a bit more disturbing. I've already tweeted about them, but the details would be shocking and horrifying. As I said, as these series go, we would be ashamed of ourselves being born in this era. Honestly speaking, I've got multiple SMSs, multiple messages on me that before you are right. अभी दूसरे सेशन में ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा. And trust me, the data which is coming, the reports which are coming every day is horrifying. Not only of Maharashtra, but of Delhi, Kerala, then West Bengal, horrifying detail. Rajasthan. So, मतलब so I'm मतलब आज हम जब पूजा से बात भी कर रहे थे, पूजा would be joining us with the fierce cyclist. yeah, मतलब कि she was narrating us, हम मेरे को और वरुण की कॉल हो रही थी, तो we she was narrating, honestly speaking, knowing all the reality, I wasn't shocked and surprised, but I was happy that she's so lucky that she's out of this mess, she's out of this dirty filthy industry. And I'm really glad that she accepted our request to come here with us, and she would be joining us very yeah, soon. And I mean, it's beyond imagination how dirty this industry is, or how dirty the people have become, or how filthy the society we are living in. This is not the society we were boasting of. कि हमारी 2500 3,000 साल की सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और लाखों सालों की हमारी पुराणों में जो लिखा है, दिस इज नॉट द वे वी यूज्ड टू लिव. Actually, we have forgotten the real way of living, and it is high time that we return back to the Vedic ways. And I would like to add on, Varun, that today's hashtag is for Puja, Justice for Pooja Missra. So I would like you to flash it so that people can tweet about it, write about it. Justice for Pooja Missra. right. And I will. I think I will have to go offline. I think she's having some issue. She is getting not getting an option to enter the studio here. So let me do In the this. in the meantime, I can take some questions from the chat. Okay, I can take the questions from the chat. sure. So let me just go offline. I'll be back in a Yeah. minute while I try to get her on. Go ahead. So I have a question from Sridhar. Vibhor, why don't you meet CBI? I have told it many times to the people that I get my information, and all my information is from the government sources. So it is verified from various sources, and my personal investigation, my team investigates the information. So I don't need to go to CBI personally. But if CBI calls me, I would be really happy to help them out and give my testimony. And it is, if they call me, I'll go. Yes, Stallion, return to Vedas. I totally agree with you. We have some questions, please? Yes, we can talk about dark web. Nabil has asked me. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डार्क वेब इज 99.9% ऑफ द इंटरनेट विच इज नॉट विजिबल टू अस. गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो हम देखते हैं, दैट इज 0.1% of the entire internet that is available in the universe. जैसे कि हम, लेट मी पुट इट एज एग्जांपल.
अगर जो हम इंटरनेट देखते हैं दैट इज वन स्टार, एंड डार्क वेब इज मिलियंस ऑफ स्टार्स. इट इज एंटायर यूनिवर्स. तो जो एक स्टार है दैट इज ओनली .1% ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. दैट इट कैन बी सीन दैट जो यूनिवर्स में एक तारे की वैल्यू है वही हमारे इंटरनेट की वैल्यू है जो हम आज देखते हैं. तो डार्क वेब इज समथिंग, आई अगेन रिपीट, पीपल डू नॉट ट्राई टू विजिट और सर्च डार्क वेब, क्योंकि बहुत डेंजरस है एंड इट इज ऑल्सो इलीगल, and it is also very illegal. So don't even try to search it, क्योंकि आपकी 2 मिनट में आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी फोटोग्राफ्स, आपकी फैमिली डिटेल्स आर लीक्ड आउट, आपकी चोरी हो जाएंगी अगर आप उसको सर्च भी करेंगे. और गवर्नमेंट एजेंसीज आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस राइट नाउ. They are monitoring the people who are working on dark web. All type of illegal activities are on dark web: extortion, murder, rape, gambling, sattavajari, everything. Priyanka Sharma, yes, it's not like that. CBI is working on my narrative. I am actually working on CBI narrative, which the investigation is taking place, और मुझे जो sources से खबर मिलती है, तो I am actually working on the narratives which CBI is working on, not the vice versa. तो मैं उनकी तरफ से काम कर रहा हूँ, ना कि वो मेरी तरह काम कर. नितिका सैनी, this is my favorite name, Nitika. Will the CBI be able to relate the death of Disha and minor girl with SSR? Absolutely, 100% Nitika. They would do it, and when the time comes, all the culprits would be punished. रॉकी, व्हाट्स द गारंटी कि अब कुछ हो पाएगा? भैया गारंटी, हम लोग पंखा नहीं बेच रहे, ये गारंटी मिलेगी. वारंटी गारंटी आपको मिलती है जब आप कुछ खरीदते हो, बेचते हो. तो वी आर नॉट सेलिंग और परचेजिंग एनीथिंग, वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस. और जस्टिस में 100% जस्टिस की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता कि सारे के सारे जाएंगे. दे वुड हैव बी कॉम्प्रोमाइजेज होंगे, डील्स होंगी, सब कुछ होगा. वी हैव टू फाइट इट आउट सो दैट वी गेट 100% जस्टिस फॉर SSR, दिशा एंड ऑल अदर पीपल, दैट माइनर गर्ल एंड many others. So guarantee, I don't know. I hope you understand that we are not selling a ceiling fan. Absolutely, blue whales attack are from dark web. Tanush Sharma, I agree with you. अपूर्वा, DCP कौन इन्वॉल्व है? आई थिंक यू ऑल नो द आंसर ऑफ दिस. मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है. एवरीवन नोज हु वाज द DCP. 25 नाम डिस्क्लोज करें? आई थिंक व्हेन द राइट टाइम कम्स, मैं बहुत जल्दी डिस्क्लोज करूंगा. आई हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज अराउंड 18 नेम्स. चलिए एक दो नाम आपको बता ही देता हूँ. एक रणवीर सिंह है, एक रणवीर कपूर है, और करण जौहर तो है ही है. तो 3 नाम मैंने बता दिए आपको जो इसमें इन्वॉल्व है मेरे सोर्सेज के हिसाब से. बहुत जल्दी आपको और भी नाम बताऊंगा. डेरिल डिसूजा, नहीं यार, आई हैवंट सीन एनी पैरानॉर्मल वीडियो ऑन सुशांत, एंड इफ यू थिंक इट्स जेन्युइन, जब तक मैं देखूंगा नहीं, हाउ वुड आई नो? लेट मी वॉच इट एंड कम बैक टू यू. Priya, would she get bail tomorrow? 99.99% no. Be assured she won't be getting.
0.1% चांस हम लेके चलते हैं कि जज के ऊपर है, हमारी फील्ड में कहते हैं। अजय यादव जी, बहुत थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दी ही खुलासा होने वाला है। Yes, Anvi, the SSR and Disha Salian's murder was telecast on dark web live, and one of the lines and links directly went to मातोश्री, जो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का घर है। So I told it yesterday only. Purvita ji, thank you so much. I would surely take care of myself and my family takes care of themselves. ना मैं उन्हें परेशान करता हूँ, ना वो मुझे परेशान करते हैं। Thank you so much for your wishes. Why did Sandeep Singh go to Delhi? Ruchi ji, I've already told that as per my information, he went to meet Subramaniam Swami ji and he wanted to meet some BJP leaders, but he was denied any appointment as per my sources. तो हालांकि मैंने सुब्रमण्यम स्वामी और ईशान जी दोनों से पूछा है, लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय मुझे ब्लॉक कर दिया। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द आंसर। अंकित थनवी, श्री देवी जी का क्या हुआ? मेरे भैया, एज पर माई सोर्सेज उनके ऊपर 50 करोड़ का बेटिंग थी जो उनके हस्बैंड ने की थी उनके नाम से, और उन्होंने जब पता लगा तो उन्होंने उनको फाइनेंस करने से मना कर दिया, तो शी वॉज किल्ड। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव राइट नाउ। Will Aditya Thackeray go behind bars? Akshit ji, I assure you 110% he would go behind bars later or sooner. कोई नहीं बचा सकता उसे। Doctor, who was the minor girl? Sorry, Doctor साहब, I cannot disclose the identity as per law. जब टाइम आएगा, चार्जशीट फाइल होगी, we would all know who the girl was. But be assured, she was a minor girl. और ना ही मैं उसके एनजीओ का नाम ले सकता हूँ because of the laws of this country. Hmm. Okay, so मेन रीजन फॉर एसएसआर मर्डर, नेहा सैनी जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि द ओनली रीजन वाज दैट ही वांटेड टू एक्सपोज द चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट थ्रू दैट माइनर गर्ल on the Bollywood and the Mumbai politics and Maharashtra politics. That is why he was killed. And I have my partner in crime, Varun, back. Varun, yeah. please take over. Okay. All right. So here's the thing. She's having some issue with the phone. She's not able to log in to this link. The only other option right now I have is at least have her on the audio, which I have her right now. So first of all, welcome to the show, Pooja. Hi, thanks. Can you Hi, hear? Pooja, Vibhor. Welcome to the show. Okay. Can you hear Pooja? Faintly, I can hear you very well. Okay. Let me try it this way. Sure. Ab bolna Vibhor. We can try it this way now. Hi, Pooja, can you hear me? Yes, I can. Chalo, wonderful. All right. So unfortunately, it looks like we won't be able to have her on the video, but at least we have her on the audio right now. So we'll do it this way. I know your technology ke kuch challenges. So first of all, as I said, welcome to the show and thank you for agreeing to be on the show. I know a lot of people wanted you to be here, Pooja, simply because of a lot of reasons. One being, Vibhor has been talking about the Bollywood mafia. He has been talking about how few of the people heading that mafia are,
literally, screwing up the whole Bollywood industry. And then he also has been talking about the drug mafia, the child trafficking angle, and whatnot. There's so much happening around the Bollywood. So I thought, it would be great to have somebody who has also witnessed and seen it from very close and has been very vocal as well. So thank you for doing this for all our listeners and the people who are watching us. I got a lot of messages on Instagram asking me to come live. Absolutely. I think we wanted to just, we were trying to reach out to you, and the only option we saw was through Instagram. And I'm glad that people who really, have been connected with us, they reached out to you as well. And I'm glad you saw all those messages as well. Yeah. All right. So I'll jump directly into this, Pooja. Everybody here, we have close to about 20,000 people watching you or listening to you right now. Each one of them have been hearing or have heard your story, or certain things which happened in the public domain. Do you want to kind of take us back to a little bit on that and tell us your story one more time for people who don't know who Pooja Missra is? For a brief introduction that I can give, you have been an amazing, I would say, supermodel, amazing actor, somebody who's been on Big Boss, who's made her own name in the Bollywood industry, who's done so much. And all of a sudden, we saw was a totally different Pooja Mishra. So why don't you walk us through your journey and tell us, the good, the bad, and ugly parts of your life as well as the Bollywood industry. Well, actually, after because these people have tried their best to finish me off because I was getting offers for movies which they were extremely insecure of. They want to be me. They're impersonating my existence. If you go to see everything that I do, every concept, I'm a very creative person. I run my own production house. I've made TV shows. I've made reality shows. I've made cookery shows. So whatever is unique about me, my style, the way I have a concept for a shoot, they keep on copying it. If you've seen my last Instagram post, you've seen there that they've copied my broken mirror effect. So they keep on copying, and this has been going on for over 10 years now. And somebody who's really powerful, which is my audience, which is the Janta, because if they decide to boycott these people, they've got nowhere to go, So they have to really speak up for me and say that stop copying Pooja Mishra. Just go and get a life. Go and find your own original ideas and execute them. Why are you after my life? Why have you singled me out and are targeting me for over 10 years now? And this is very minor compared to the worst things that I've been through. They have robbed my movies, 35 movies. I was told my phone was hacked by one of the film industry people. And whatever movies I was getting was being given to Salman Khan's coterie of girlfriends. Be it Mehak, be it Malaika, be it Sonakshi. So I need to understand, where did all my work go? You all are doing movies after movies. You all are tasting success and traveling the world. Why are you after my life? Why have you singled me out and hanged me? Absolutely, and that is why I think the call that we had, during that call also we Wait discussed. a minute, wait a minute. Huh. Varun, let me tell you, Pooja, I have confirmed it from my sources that your phone was hacked by none other than the Khan brothers. I have 100% confirmation. Okay. By whom? The You Khan are brothers. one of the Khan brothers. Right. So that's why all the work was going to his coterie of girls, whosoever he was hanging out with or whosoever he was interested in or whatever. So Vibhor, you've been very vocal, right? I'll let you kind of also talk a little bit about this. You mentioned Khan brother. I think you might even know the name, so I don't know if you want to reveal that name as well. Arwaz Khan. Why Okay, should I be afraid? right. Varun, this is the ninth day together. Have you seen Yeah, any day I've been afraid of taking names? 10 10 days. days, yeah. Yeah,
मुझे एक दिन की So वैल्यू है विभोर अब तो. It's been 10 days. Every single day has been something huge, something big. So yes, this is again a big update that he's sharing. Of course, that Arbaz Khan was maybe, tracking phone of Pooja. But Pooja, can you, before we get into these details, I know I want to respect, your, the privacy and the things that you really don't want to talk. We completely agree and we completely will abide by that. But at the same time, do you want to talk a little bit about the stories, about certain things that happened? And I'll tell you, this is a very honest platform, but at the same time, we really want to make sure that whatever we share here has some kind of validation, some kind of, of course, proofs. But at the same time, feel free to open up and share as much as you want or you feel is right. Right. So yeah, so I mean today I feel very crestfallen because they've robbed me of everything, and through this phone, even my money, they have made me like literally bankrupt. They've made me spend all my money in all the wrong places. They've lured me into things, like invest in this, invest in that. All these on Instagram, I keep on getting these messages and everything. On other places also, WhatsApp and everything. So they made me, basically they were after money and sex. That's it. So they robbed all my money, they robbed all my movies, and they've left me to die, today. And I need support because I have lodged cases, even against the hacking of the phone. There's a case lodged under the IT Act of 2000. So I need a lawyer to kind of help me, get a CBI interrogation done on the cases. Because once the CBI is after them, they've got nowhere to run. They can't run. Right. And that's what अभी काफी लोग हिंदी में भी बात करने के लिए कह रहे हैं. सो या हम हिंदी में भी बात करेंगे. पूजा की जो स्टोरी है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी ऑल द कमेंट्स दैट आर कमिंग इन ऑन द चैट. तो आप वो कमेंट जरूर देखें. पूजा, आई वुड एनकरेज यू, अगर आप लॉग इन करना ही तो आप यूट्यूब पर से शायद देख ही पाएंगी. बट वहां पर नहीं, मैं देख नहीं पाऊंगी. I won't be able to अच्छा, see the हाँ, you will comments not. right now. Only करेक्ट, afterwards when ठीक I है. check, then maybe. राइट. तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस उसमें से पिक करूंगा. बहुत सारे लोग आपकी स्टोरी के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं कि आप, इफ यू कुड टेक अस बैक कपल ऑफ इयर्स, थोड़ा हमें बताएं कि कहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है और इफ पॉसिबल कौन-कौन लोग इसमें इन्वॉल्व कैसे हुए. देखिए, कहानी शुरू होती है 2004-2005 से. Okay, 15 years it has been now. My father was the chief commissioner of income tax, and when he retired, he shifted to Pune. I decided to stay in Bombay. तो मुझे उनके फ्रेंड के एक गेस्ट हाउस में मैं रुकी हुई थी, वीडियोकॉन के गेस्ट हाउस में, और उन लोग के साथ मिलके ये शत्रुघ्न सिन्हा और ये सलमान खान की फैमिली ने मेरे को कितना परेशान किया है पिछले 15 सालों में. और भी कोई लड़की होती उसने सुसाइड कमिट कर लिया होता, अभी तक नहीं सह पाती वो. हर तरीके से चील और गिद्ध की तरह इन लोगों ने अपनी चोंच मुझ पे डाल के मेरे को इतना परेशान किया है हर तरीके से कि there was a time when I was literally losing it. ये जो YouTube पे मेरे कुछ लाइव्स पड़े हुए हैं जिसे लोग देखते हैं, जिसमें गालियां हैं और चीखना चिल्लाना है, मुझे पागल बना दिया था इन लोगों ने. क्योंकि ये लोग मुझे ड्रग्स देते थे बिना मुझे बताए हुए, मेरे पानी में मिला के. मेरे घर की चाबी इन लोग के पास थी, मेरा फोन इनके हाथ पॉकेट में था हैक करके. तो मुझे कितना परेशान किया गया है. बॉम्बे में मेरी सिस्टर का घर है जहाँ मैं रहती थी कुछ अच्छे 4 से 7 साल. वहां से मेरे को बेदखल कर दिया बिग बॉस के बाद, क्योंकि ये लोग की सबसे डर इन्हें लगा हुआ था कि बिग बॉस के बाद मैं मूवीज साइन कर लूंगी, मैं स्टार बन जाऊंगी. तो बिग बॉस के बाद मेरे को पुणे भेज दिया. मेरे डैड को भी इन्हीं लोगों ने मारा, पान में कुछ मिला के खिला दिया था, उन्हें खून की उल्टी होने लगी. तो बहुत क्राइम है मेरे केस में, तो बहुत ज्यादा क्राइम है. इसीलिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल ऑफेंस है ये सारा. द सीबीआई ही इसे सीधा कर सकती है. बहुत ज्यादा क्राइम है इसमें, और इंसान की जिंदगी की इनको कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है. तो ये सब बिल्कुल गलत बात है. दिस इज रियली रॉन्ग. और किसी के पीछे आप कितना पड़ेंगे, उसकी जिंदगी आप सालों से बिगाड़ रहे हैं. अब तो उसे बख्शो, अब तो जो उसका सपना है उसे पूरा होने दो. They haven't let me do one proper Bollywood film. I have done item numbers, but मेरी सारी पिक्चरें 35 मूवीज, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, हिंदी, ऑफ बीट इंडिया एंड हॉलीवुड
Indo-Western movies, सारा मेरा ये लोग चुरा के बैठे हुए. They have literally ruined me as though their mission was to ruin me forever. Force me to, do what people think that I should have done by now. That is commit suicide. राइट एंड विभोर ने बहुत अभी कुछ दिन पहले ये भी एक बात रिलीज करी थी कि सलमान खान हो गए या एंड एनीबडी इन हिज फ्रेटर्निटी दे आर आल्सो इनटू दिस द चाइल्ड प्रेडिटेशन जिसे कहते हैं दे आर ऑल काइंड ऑफ pedophile. What do you have to say about that? Well, I don't know much about them doing all that also, but I know that वो काफी कुछ वो लोग करते हैं जो सही नहीं है, जो इलीगल है. ऐसे मेरे को सुनने में आया है लोगों से. People have called me and told me that they do a lot of things which are illegal. Right. And I think, Vibhor, I think you also, when you were talking, that's why you wanted to start this hashtag, which we've just initiated. But थोड़ा सा आप भी इसके बारे में बात करना चाहते थे, Vibhor. Absolutely. मैंने जैसे बताया पहले, when we were talking to Pooja on call this evening, Pooja, honestly, knowing the reality myself deep, I wasn't surprised what happened with you. But I felt happy for you that you were lucky enough to come out of it and to save yourself, and you actually you have survived this ordeal very bravely. मतलब सिंपल बात अगर की जाए कि अभी तक she is not dead is a great achievement, I would say. लोग ये successful ना हो पाए. And let me tell you all, Pooja अभी live है हमारे साथ. I had tweeted that 300 plus girls minor girls went missing from Mumbai orphanages, various orphanages, from 24th March to 14 June. All these girls were supplied to top Bollywood actors, top politicians, and no one knows whether they are dead or alive, whether they are still into prostitution, कौन से रेड लाइट एरिया में उनको फेंक दिया गया है, whether they have been killed or their organs, after killing them, their organs have been sold off. And Mumbai police is already involved in this, क्योंकि एक भी ऑर्फनेज की वार्डन ने, जो मेरे पास रिपोर्ट है, ना ही उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई, ना ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई. एंड मुंबई पुलिस नोज इट, क्योंकि लॉकडाउन था. द ड्यूटी ऑफ सप्लाइंग these minor girls was with the officers of the Mumbai police. तो आपने जब मुझे बोला ना पूजा कि मुंबई पुलिस is something, I don't want to use that word, I absolutely agree. They are pimps of these politicians and Bollywood actors. सभी नहीं, not all the 80,000 force, लेकिन कुछ लोग जिनके कहने पे होता है. Right. And उसके बारे में भी I really want to talk about that a little bit. Pooja, अपने experience से भी you've just said कि आपके बहुत सारे cases हैं and you've been given a runaround. So can you talk a little bit about the role or the involvement of the Mumbai police and how they are kind of giving you a runaround? Well, actually, I've lodged 3 cases against the state government of Maharashtra, and that's because I've lodged innumerable FIRs, innumerable complaints to the police, and they've taken no action. And essentially, in Bombay and in Delhi, there have been many complaints because I was staying in Delhi for a good 9 months when I was making my TV show Abhi To Party Shuru Hui Hai, which aired on E24 Bollywood news channel. So, I just feel that the police have been totally corrupt when it comes to handling my case or giving me any sense of security. There were times when I asked them for protection. They gave me nothing. When I was in Delhi, I was staying in different hotels. Every second day, they used to make me change the hotel. The hotel reception used to call me and say that we don't have any rooms. Please vacate. So because they were coming into my room at night, drugging me and taking advantage of me, So
I've gone and I've reported this to the police on many occasions, but the police has been totally careless. They've taken no action, no strict action, and I'm very angry with the police. Very, very angry, upset, crestfallen, heartbroken. That how can these people who call themselves Superman, Batman, we used to think that police is like a superhero, but they have let me down so badly, and so many times that now I can never trust the police. Never. Right. And Vibhor, I think one of the things जो आप आज बात करना भी चाहते थे इस लाइव पर was ये पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट आपने ट्वीट भी किया था कि बहुत ही हाई लेवल तक people are involved. You know, tell us about. Absolutely. सीधे बोलते हैं, आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाइए. ये तो उनका ये ऑल पूरी हिंदुस्तान की पुलिस का पेट डायलॉग है. जब उनको कुछ करना नहीं होगा तो कोर्ट जाओ. तो तुम लोग किस लिए बैठे हो? तुम किस बात की तनख्वाह खा रहे हो? पब्लिक का पैसा ले रहे हो, रिश्वतें तुम लो, ब्राइब तुम लो, मतलब कि तनख्वाह भी तुम लो और मतलब शोषण भी तुम लोग करो. So I was telling Pooja, I was telling Varun also, and I've tweeted also कि सुशांत के मर्डर में 7 लोग इन्वॉल्व थे एज पर माय सोर्सेज, और उन 7 में से 3 लोग पुलिस वाले थे, इंक्लूडिंग अ डीसीपी रैंक ऑफिसर. So this shows how deep the nexus was in the killing of Sushant Singh Rajput. Right. और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो डीसीपी कौन था, सबको पता. फिर भी एक बार सबके लिए, क्योंकि सब लोग नाम सुना सकते हैं. As per my sources, it is DCP Bandra Tirumukhi. He can deny it. बहुत जल्दी उनसे सीबीआई पूछताछ करेगी मेरे हिसाब से. But he was present inside Sushant show. Wow, this is huge. As per my sources. Right. This is huge because हम लोग समझते हैं कि पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है, और यहाँ पर आप जो रिवील कर रहे हैं कि पुलिस ही गई थी and was a witness मारते हुए. This is absolutely. जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाती है. This is what is happening in Mumbai. Mumbai is on the verge of collapse because of the incompetence of the protectors of the society. Wow. All right, going back to Pooja and Pooja's case, I think Vibhor आपने भी बात करी थी, आपने भी थोड़ा उनको कुछ चीजों में कॉन्फिडेंस दिलाया है. I think what should be the next step? Pooja, don't worry, I've received your documents and let me assure you, लोगों ने भी बोला मुझे, why don't you take, let me say it on record that I am taking up Pooja Missra's cases and I would be guiding her legally and would be fighting for her. Absolutely. I'm saying it on record live, and I promise that justice would be done to you sooner or later. Thank you. That's also a great initiative, I would say, because जितना मैं सुन रहा था पूजा से, कि इतना टर्न अराउंड, इतना उसको हर जगह से भगाया जा रहा था, और कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी. And we all know, because of the big shots that are involved in this, they have power, they have money, and they can do anything. Now, another topic which, again, I leave it up to you, Pooja, अगर आप बात करना भी चाहें इस बारे में या नहीं करना चाहें, up to you. But what is this with Sonakshi? Sonakshi का क्या है? I don't know. She's got some problem with me. She's very insecure of me to begin with, because that's why she keeps on copying me, aping me, and this is happening for 10 years. It gets very irritating and annoying if your every move is being aped and that person is trying to make a bigger fashion statement than you can. She's always done that, and she's used nepotism as a tool to do that. So Pooja, is that correct? Pooja. And I said no at that time. I said, why don't you take Malaika? And the next thing they are taking Sonakshi, because Poonam got to know that there's a movie being made and this, that, and the other. And she knows Salman for a while now. Mm-hmm. So she knows the family. So उसने अपनी बेटी को अंदर डाल दिया और मेरा पत्ता काट दिया. And in fact, I'm told that she was instrumental in letting these people do whatever they did to me, take advantage of me. She was instrumental in that. क्योंकि उसको था कि आप पूजा को ले लो, उसके साथ जो करना है कर लो, मेरी बेटी को बस स्टार बना दो.
Wow. That was her mental setup, which is cheap. Because I'm also the daughter of Shatrughan Sinha's very good friend at one time, my father. तो उसे अपनी बेटी को आगे बढ़ाने की इतनी एम्बिशन थी कि उसने मेरे को यूज किया. वो बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि चावल के साथ घुन भी पिस जाते हैं. You know? She just used me because I was alone in Bombay and my father had shifted to Pune after retirement, and she just wanted to make her daughter bigger. All the time they keep on competing with me. कुछ मेरा निकलता है, इतना जलते हैं ये लोग. They are so jealous. You know, same चीज करने लगेंगे. जो भी मैं करती हूँ सेम चीज करने लगेंगे. कॉन्सेप्ट शूट का चुरा लिया आप लोग के सामने है बात. बिल्कुल क्लियर कट मैंने इंस्टाग्राम पे विद एविडेंस, सब कुछ विद एविडेंस में डालती हूँ. आप खुद ही देख लीजिए. और ये पहली बार नहीं हो रहा है. 10 साल से, 2005, 15 साल से कर रही है उसकी मदद पूनम. जो मेरी जिंदगी में हो रहा है पेपर में अपने नाम के नीचे छपवा लेते हैं ये लोग. कितना किया है, कितना किया है. to cry tears of blood that why are these bastards after me, why are they targeting me. पर कर रहे और अभी भी कर रहे. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें लगता है कि पूजा मिश्रा के फादर को तो मार डाला, अभी तो उसके साथ कोई है नहीं, तो जो मने करते रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता. हम तो माफिया है मूवी इंडस्ट्री की. सलमान खान हमारे साथ है, कोई हमें छू नहीं सकता. This is what Sonakshi's problem is. She's insecure of me and she's a wannabe. That's why she keeps on copying me. Right. Sorry, Vibhor, आप भी कुछ कह रहे थे. Let me tell you, Pooja, I got a call after I had a talk to you. I had a call from the PR of one of the biggest stars in the industry. I can't name that because she's a dear friend of mine, the PR manager, and she said कि पूजा मिश्रा को मत लाओ, do take whatever you want. And I said देख, दोस्त है इसीलिए छोड़ रहा हूँ, और नई रिकॉर्डिंग 2 मिनट में पब्लिक कर दो. Wow. तो और I'll tell you offline किसका फोन आया था. I tell you, I won't hide it anything from you क्योंकि मेरी दोस्त है, कई सालों से मेरे साथ कॉलेज में पढ़ी हुई है. So I cannot reveal the name of the PR and the star right now. So some decency has to be maintained in friendship. So but let me assure you, इनके पापों का घड़ा भर चुका है. और जैसे कि मैंने कहा था, मेरे पास तो सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन हैं ऊपर से. जो मेरे दिल्ली में बात हो रही, किसी को मत बख्शियो. किसी का नाम लेने से पहले ये मत सोचियो कि वो कौन है. क्या वो पुलिस वाला है या वो खुद प्राइम मिनिस्टर है. जिसके खिलाफ सबूत मिले उसका नाम ले. These were the categorical instructions to me. जब मैंने ये सीरीज कल से चालू की थी, कल ही मेरी बात हुई थी दिल्ली में. And you know, this is really very very shameful कि इतने बड़े बड़े you know stars हैं कहने को ये, और इतना इन्होंने पैसा कमाया है और इस तरह से इन्होंने कमाया है अपना नाम, और हम लोग अभी भी आज की डेट में भी सपोर्ट करते हैं. पूजा, टू योर क्वेश्चन, हाउ you know, of course, जब से हमने सोशल मीडिया पे डाला है, you know, and it has not been like, you know, more than a what 3 to 4 hours. जैसे ही डाला है, you know, between me and I'm sure Vibhor, हमारी उसके बाद बात तो नहीं हुई, but मुझे ही इतने सारे मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस आए हैं कि Absolutely. why are you getting Pooja? I was shocked कि मुझे, I mean, this is a platform. This is a platform for everyone. You know, पूजा मिश्रा हो या you know कल को कोई भी हो सकता है, आपका भाई, आपकी बहन. हमने जब से ये सुशांत सिंह राजपूत का मूवमेंट एक शुरू की है, I think people have connected so well because they feel it could be them tomorrow. ये किसी के साथ भी हो सकता है. इतने बड़े ये कहने को स्टार, सुपरस्टार्स, ये किसी को भी दबा सकते हैं, कभी भी दबा सकते हैं. और you know, अभी सुशांत के केस में इतनी डेथ्स के बारे में पता चल रहा है, इतने डिफरेंट एंगल्स के बारे में पता चल रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि इतना इजीली इन्होंने मूवी बना के रखी हुई है. यू नो, हम सोचते हैं मूवी में सब कुछ वो एक जैसे काल्पनिक कहते हैं ना, वो है, कैरेक्टर्स हैं. तो यहाँ पर ये सब कुछ रियल लाइफ में सब कुछ करते जा रहे हैं, सेम टू सेम, which is shocking, which is very shocking. So you know, it's just not PR. रेगुलर लोग भी इतना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, इतना ज्यादा, कि वो भी हमें मैसेज करते हैं. कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं. और सोशल मीडिया पे आप जाएंगे, आपको मैंने जैसे कहा, ट्विटर पे आप जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, वहां पर भी द मोमेंट हमने ये डाला कि पूजा मिश्रा विल जॉइन अस, जहां इतने सपोर्टर्स भी आए, क्योंकि
एक चीज जो कॉमन थ्रेड जो मैं सबके अंदर बोलना चाहता हूँ, सबने बोला कि पूजा मिश्रा चीख चीख के किसी साल में चिल्ला के कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। उस टाइम हमने नहीं सुना क्योंकि हम सब आई थिंक इन स्टार्स और इन इन चीजों में हम भी कवर्ड थे, हमें भी And नहीं। today is a totally different roop of Pooja today in front of us. She's so humble, she's so decently talking. ये यप, एक अलग रूप है पूजा का जो हम बिग बॉस में देखते हैं. People don't know it. It's a shame that she cannot come on video. ये राइट, हमारे टेक्निकल इश्यूज है. But Pooja, you have totally changed the perception of people. Hats off to you. Salute to you, girl. Thank you. एब्सोल्युटली। और आप आपके लिए, बिकॉज राइट नाउ यू कैन नॉट सी इट, यू नो देयर आर कमेंट्स कमिंग इन People are ऑन। telling Pooja, we love you. Yeah, Pooja, yes, sister, and justice for Pooja Mishra. You know, I see all the comments. I would encourage you. You know, once we are done with this, please go ahead. जब ये video upload हो जाएगा, make sure you see all the comments. It will give you a lot of motivation, a lot of, you Yes, know. I think you have the support of people, and this is your biggest support. yeah, and really, I'm also very surprised right now. इतना support देखने के बाद, I think people are saying, Pooja, God bless you. We stand by you, Pooja Mishra. So I hope next time जब Thank you. we fix this technical issue and you are able to talk to your, you know, these fans, these people who now have listened to you, you know, one on one. I think ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी. You know, people don't get a platform, और इसीलिए I think we all have been very fortunate कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं, ऐसी चीजें बाहर आई हैं जिसकी वजह से सब लोग, सबके नाम अब सामने आ चुके हैं, लोग अब डर रहे हैं. अगर आपका नाम डालने से हम लोगों को ही इतना कांटेक्ट करने लग गए कि प्लीज डोंट गेट हर, और किसी जो भी रीजन है उनका, यू नो, तो आप सोच सकती हैं कि यू नो हाउ हाउ फैक्चुअल यू आर, कितने आपके पास फैक्ट्स हैं जो आप ला सकती थी, पहले भी ला सकती थी और अभी भी आएंगे. आई एम प्रीटी श्योर with Vibhor acknowledging this that he's going to represent you. I think this has gone on a totally different level. So you know, stay positive and stay strong. उनकी रातों की नींद हराम हो गई है. बिल्कुल. Getting a call from a top actor's PR and कैटेगोरिकली ऑफर था कि जो चाहिए विभोर बता, मैं दिलवाती हूँ, पूजा को मत लाई. मैंने कहा एंड आई वाज लाइक, तू मुझे कब से जानती है? कहती 15 years. मैंने कहा तो तुझे शर्म नहीं आई मुझे ये बात बोलते हो? कहती मैं अपने बॉस के कहने पे कर रही हूँ. मैं कहा अपने बॉस को बोल. मैं उसको शब्द यूज नहीं कर सकता जो मैंने बोले होते, बिकॉज दोस्त है 15 साल से, तो मैं उससे कुछ भी बोल सकता. तो आई एश्योर यू, you have our support. You have been a very brave woman, a fierce tigress, and you have suffered a lot. I assure you, Pooja, that you'll get all the support from me, Varun, and not only from V2, but from the people of this country. मैंने पूजा जस्टिस ऑफ पूजा मिश्रा हैशटैग चलाया था, and more than 2000 tweets have already been tweeted as for अभी तक. So this shows how much people are supporting you. होता जब मैंने स्कैम्स खोलने चालू किए थे ना, तो 1 महीना पहले लोगों ने मुझे भी कहा था पागल आदमी कुछ भी बोल रहा. द सेम गोज विद यू पूजा. जब तुमने ये सब खोलना चालू किया था, पीपल वर, हमने इन लोगों को इतना सर पे चढ़ा रखा था, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, तो भगवान का रूप है. तो जब इनकी रियलिटी अब सामने आ रही है, बिकॉज ऑफ थैंक गॉड सुशांत came as a divine force in our lives, that we all are connected today. Now the end of Bollywood mafia is very near. इनके पापों का घड़ा भर चुका है. All the graves in the sea of Mumbai would be dug out very soon. I assure you that. And every person in this country. Wow. मैंने लोगों को तो बताया था, शायद आपको पता हो नहीं पता हो. I was offered 50 crore by pimp of Uddhav Thackeray. आपकी मैंने ओपनली आवाज कट रही थी. Vibhor, say that again. I was offered 50 crores by a pimp of Uddhav Thackeray to shut my mouth. और मैंने
30 सेकंड के अंदर ट्वीट डाल दिया था कि ये हिम्मत अगली बार मत करना, मैं सेल पे नहीं हूँ, मेरी आत्मा सेल पे नहीं है, आई एम नॉट ऑन सेल, आई हैव ऑलरेडी सोल्ड माई सोल टू द कंट्री. So don't worry, everything would be fine. You have suffered a lot. With God's grace, everything is getting better. The mafia is getting cleaned up, and in coming days, everything would we would see a new era of Bollywood, a new era of Bollywood without nepotism, where outsiders would rule the nation. Absolutely, I assure you that. Great, great. All right. Thank you. Yeah. So I think Pooja, before I let you go, anything you want to say, anything you want to tell all the young aspiring, people who want to do certain things, but then they are right now बहुत डर गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं. How would you kind of motivate them, or what would you say? Or I'll tell them to. Go ahead. I'll tell them to never get stuck in the quicksand of Bollywood alone. हमेशा ये जो लड़कियां अपनी मदर्स लेके चलती हैं, अब मुझे समझ आ रहा है क्यों. मैं हमेशा अकेले लड़ी, रानी की झांसी की तरह अकेले लड़ी. मैंने कभी अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं मांगा. आप चेक कर लीजिए, हर जगह मैं अकेले गई. 9 महीने में दिल्ली में रह के आई अकेले. वहां मेरा क्या हाल किया इन लोग ने. होटल में घुस के मेरे कपड़े चुराए, मेरे को advantage liya mera. So I always fought alone, and that's why they kept on defeating me, because they outnumbered me and bullied me. तो मैं कहूंगी कि कहीं भी आप लोग जो aspiring लोग हैं, बाहर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, take a parent with you or take a friend with you. कहीं अकेले मत जाइए, because I have gone to places where angels fear to tread. I've been that brave, but I don't think that everybody should take that chance. और अपने फ्रेंड के साथ जाइए, ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं अकेले मत चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत घपला होता है, बहुत हाइड एंड सीक क्लोक एंड डैगर है ये इंडस्ट्री. तो संभल के. That's it. And the last comment which I would definitely need from you is, ये लोग जो एक तरह से गुंडागर्दी करते हैं, जो ये सब चीजें करते हैं हम सबके बीच में रह के, उनके लिए क्या मैसेज होगा आज आपके लिए, आपके पास? Well, I would just say that you all think that you all can get away with murder, you all can get away with ruining an innocent person's life. So please recheck your facts, because there will be a time when karma will catch up, and karma is a bitch. It doesn't spare anybody. Right. Great. All right. On that note, thank you, Pooja, for joining. Next time we will definitely try to have you here on audio and video both, and get more details around that. But it was really a great session, and like what Vibhor has said, you have full support. So Vibhor, before she leaves, you want to say something? Absolutely, it was a lovely session. It was great to hear you from Pooja. And as I said before, the entire perception about you has changed. वो जो चिल्लाती थी बिग बॉस में वो लड़की, आज लोगों ने आपका एक हम्बल रूप देखा है, एंड पीपल वुड लव यू फॉर दैट. वी ऑल लव यू, वी ऑल सल्यूट यू. जस्ट स्टे स्ट्रांग, वी ऑल आर विद यू, एंड यू वुड गेट जस्टिस. आई अश्योर यू दैट. आई वुड, कोई और खड़ा ना हो, मैं और वरुण तो आपके साथ खड़े. बिल्कुल. All right. On that note, thank you so much, Pooja. बहुत जल्दी बात करते हैं फिर. Great, thank you. Thank you so much. Yeah. All right. Yeah. Okay. All right. So now for the next 25 or 20 more minutes, आज हम बहुत छोटा session ले रहे हैं. We are not gonna, take it for a very long time. But I think you have certain things that you really want to talk. So go ahead, Vibhor. सबसे पहले तो आप ये जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक चीज आपके बोलने से पहले मैं obviously I'm gonna take a minute here. सबसे पहली चीज, I've been 1 second, you're getting a call, I think. Okay, let me mute him. Okay, so जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, this is just a platform, and we have picked up
you know, this justice for Sushant एक ऐसी movement है जिसको हम end तक लेके जाएंगे, no doubt about it. But at the same time, there are so many other things I've already talked about for you know, justice for Ajitab, और आज you know, विभोर ने जैसे justice for Pooja Missra भी कहा है. So I think we will definitely keep on talking about all the issues, all the problems of our society. But at the same time, right now our focus is 100%, I would say, और 99.9%, अगर हम एक 0.1% कहेंगे, हम बाकी चीज़ों को भी देख रहे हैं, but 99.9% the whole movement is around Sushant Singh Rajput. We will not let it fizzle. बहुत सारी पेड पब्लिसिटी हो रही है, बहुत सारे हैशटैग्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा है कि इस मूवमेंट को बंद किया जाए या इसको स्लो डाउन किया जाए. दिस विल नॉट हैपन, यू नो, विद ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम यू ऑल. आई थिंक वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी गेट द पीपल आउट. And Vibhor ने तो already, you know, he started naming and shaming them publicly. हम लोग कई बार on a platform or otherwise हम सोचते हैं कि you know what, let's just give some hints, just give some names, and you know, not names but थोड़े से उनके related items बात कर लेते हैं. But Vibhor has been naming and shaming them and he will continue to do it. आज जो सबसे बड़ी वो जो रिवील करने आए हैं, जो कर रहे हैं और थोड़ा बता चुके हैं, there have been 300 plus kids, you know, and these kids are from some NGOs. तो उसके बारे में भी once Vibhor is here, he will definitely let all of us know कि कैसे NGOs के you know, the modus operandi that these guys have, कि कैसे NGOs को use करके इनमें से young, you know, छोटे छोटे बच्चे, you know, आज मैं देख रहा था, एक न्यूज़ आर्टिकल भी आया था कि मुश्किल से कोई 9 महीने की छोटी बच्ची को भी they wanted to kind of, but luckily she was saved. So this is all is very very very, you know, sad and very I mean, पता नहीं इन लोगों के शायद ज़मीर ही नहीं बचे हैं या ज़मीर है ही नहीं. So वो सारी चीज़ें सुन के बहुत डर लगता है. But at the same time, uh, Vibhor, I think, has come up with all these directions from, you know, whosoever he's getting it. Hats off to that person also. जहां पर भी हैं, अगर अभी ये सेशन देख भी रहे हैं, it's really great that somebody has given that full access to Vibhor to just, you know, bring these people out in the public. हम लोग बहुत, हमने इनको स्टार, हमने इनको पूज लिया, इनके मंदिर बना लिए. और you know, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले विभोर ने एक ट्वीट किया था, एक पोल डाला था अराउंड अमिताभ बच्चन, दैट वो आईएसआई के हैं, आईएसआई के हैं, आईएसआई के हैं, या ऑल ऑफ द अबव. आई थिंक that is a big thing to say. And अगर ये सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, I'm sure they're getting scared. They are really getting scared now कि ये सब कुछ बाहर आ गया फाइनली. बहुत साल हो गए, बहुत सालों साल से हम इनके you know, मूवीज देखने जाते थे और बहुत कुछ करते थे. And this was really 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 shocking coming from Vibhor. I am pretty sure ये Vibhor अभी जो ऑफलाइन भी गया है, there is something you know, he must have got some kind of call or something around this conversation that we had. And I think he's been taking a lot of heat from certain people, but he's fearless. He is really on a mission right now. I just hope and I pray that this you know, some divine power, चाहे वो सुशांत है, चाहे वो कोई भी, you know, n number of people who have been killed during this, उनकी divine power है that keeps him going, that keeps him motivated, because this guy is really taking a huge risk on his own life. But at the same time, अगर एक विभोर ये सब चीजें बाहर नहीं लाएगा, it will definitely you know, never happen. And actually I'm gonna flash this tweet. किसी ने ये tweet डाला है, मुझे किसी ने actually मैसेज भेजा है कि अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था राइट बिफोर श्रीदेवी died. And yes, there has to be some kind of relation, you know, सब चीजें हैं. And उससे मुझे एक और चीज याद आई, you know, I've been talking about justice for Pooja, justice for Ajitab. एक और hashtag है justice for Sridevi.
जस्टिस फॉर श्रीदेवी में एक एक इंडिविजुअल है who is actually taking this cause, and she's been fighting fearlessly. She also reached out, and उनसे भी बहुत जल्दी हमारी बात होगी इस प्लेटफॉर्म पे, उनसे भी हम कुछ डिटेल्स लेंगे. She has got a document as well जहाँ पर it has been written, and I still haven't validated it, so I cannot say with 100% confidence that it's true. But उस document पे, and it's on a notepad or a letterhead of the Dubai government actually, and it's quite possible it's in the public domain as well, so आप लोग search करके भी मुझे बता सकते हैं. उसके ऊपर साफ लिखा हुआ है, there were certain marks on Sridevi's body that suggest that she did not just fell in a bathtub, and there were drugs involved, there were certain other things involved, and then there was some kind of force that was also involved. So I think all this speaks volume about all the nonsense that is going on. And जो लोग ये कह रहे हैं कि 300 kids, just wait for Vibhor. Just wait for him in the I'm next few. back. Okay. All right. So बहुत सारे comments आ रहे हैं. We were just talking about other cases as well, other issues. I was also talking about Sridevi. Somebody reached out to me who is leading that fight as well. Sridevi के case में भी there is a lot of discrepancy. Lot of documents have been floating around. I don't know how much, or do you want to comment on that, Sridevi के case में? Absolutely murder, no doubt about that. Bonnie Kapoor is involved, and again, the kingpin of this murder is none other than Salman Khan. No doubt about that. Yep. मैं बताता हूँ ना, मैं जब कहता हूँ कितने लोगों की मौत के ये लोग जिम्मेदार हैं इनको, और उसके बाद ये सो कैसे पाते हैं. आई ट्रस्ट मी, आई हैव सीन डेथ वेरी क्लोजली. अपनी ही नहीं, बहुतों की डेथ देखी है. कई बार होता है कि रात को उनके चेहरे सामने आ जाते, नींद नहीं आती. आई डोंट नो हाउ दीज पीपल कैन इवन फेस कैमरा, तो दूर अपने आप को मिरर में कैसे फेस करते हैं. All एंड right. लेट मी टेल यू, मैंने 300 बच्चों की बात की. इट कैन बी मोर देन दैट. पूरे महाराष्ट्र का डाटा आ रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा हमारे पास. मैं आपको मॉडल ऑपरेंडी समझा देता हूँ इन ऑर्फनेजेस की. जैसे कि 100 बच्चे इन ऑर्फनेजेस में साल में आए. सो व्हाट हैपेंस इज, ऑन रिकॉर्ड से 25 बच्चे लिए जाते हैं, बाकी 75 बच्चों को तो ऑन रोड लिया ही नहीं जाता. तो ऑफिशियली दे आर नॉट एग्जिस्टेंट इन द रिकॉर्ड ऑफ दीज ऑर्फनेजेस. और यही बच्चे स्कूल जाते हुए, घर आते हुए उठा लिए जाते हैं. और लॉकडाउन में मैं बताता हूँ क्यों इतना सब कुछ हुआ. हर एक चीज की डिमांड बढ़ गई थी. आई एम सॉरी आई एम यूजिंग सच वर्ड्स, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई हैव टू यूज इट. सेक्स की डिमांड, दारू की डिमांड, ड्रग्स की डिमांड वाज एट पीक, क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं. 3 गुना 4 गुना प्राइसेस हो गए थे. एंड दीज 300 गर्ल्स, माइनर गर्ल्स, वर सप्लाइड टू टॉप बॉलीवुड एक्टर्स. मैं नाम ले लूं तो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, नेम वन एंड एवरीवन वाज इन्वॉल्वड, एकता कपूर. सबके घरों में, पार्टीज में इनको पहुंचाया गया था. और जिस अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में तो ये भी खबर आई है कि वो आदमी अगर किसी लड़की के पीरियड चलते तब नहीं छोड़ता. इस सच्चा मॉन्स्टर. I know you're speechless, Varun, right now, but I have to speak up. This is my job. That is what I'm here for. Every fucking Bollywood bastard is involved in this. Karan Johar, Ranbir Kapoor. रणबीर कपूर से पूछेगा जिस दिन उसने अपनी बाप की चिता को आग दी थी, उसके घर में कौन आया था. एक 13 साल की बच्ची, जिस दिन अपने बाप की चिता को आग दी थी उसने.
ये है इन लोगों का करेक्टर। ड्रग्स व्रग्स भूल जाइए यार, एक छोटी मोटी चीजें मैंने बहुत की है जिंदगी में, नशे मैंने करके बैठा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 12-12 13-13 साल की बच्चियां यार। When I say that I want a daughter and मैं डरता हूँ कि मेरी बेटी, हालांकि मैं डॉटर चाहता हूँ, फिर भी मैं डरूंगा। मैं कभी नहीं डरूंगा जिंदगी में, लेकिन उस बेटी के लिए डरूंगा कि उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ ना हो, और हर बच्ची के साथ। मतलब तेरा बाप मरा है और तू ये काम कर रहा है ड्रग्स के नशे में। स्पीचलेस। मेरे को जब एक, आई मीन आई कैन, मैं हैप्पी टू गो गाय लगता हूँ, लेकिन जब मेरे को पता लगती है ना ये बातें, तो मेरा दिल करता है रिवॉल्वर उठाऊं और एक एक को गोली मारूं। बाय गॉड मेरे को बहुत मन करता है। उसके बाद मुझे फांसी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आई वुड डाई एज अ मार्टियर। This is, सब मैं मैसेजेस देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन अगेन, बार 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 बार, आई थिंक आई हैव टू ऑल्सो लुक एट फ्यू ऑफ द पीपल। पहली बात तो मैं जरूर कहता हूँ कि प्लीज स्टॉप एंड रिफ्रेन फ्रॉम पुटिंग एनी बैड कमेंट्स इन द चैट। आई थिंक हमने पहले भी ये 2-4 बार टॉपिक छेड़ा है, बात करी है इस बारे में। सो प्लीज stop and refrain yourself from doing all this on the chat. This chat is not for अपना उगलने के लिए। अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है बोलने के लिए तो आप कुछ भी ना बोले। दूसरी बात, एक कॉमन ब्लॉक क्वेश्चन। देम, ब्लॉक देम, या ब्लॉक देम इमीडिएट। आई एम ब्लॉकिंग गाइस। एक चीज और मैं बताने देता हूँ, बहुत ही क्लियर बता देता हूँ। आई थिंक ये बहुत लोगों के आ रहा है और बहुत लोगों ने किया है। दिस इज नॉट अ पब्लिसिटी स्टंट। यहाँ पर बैठ के हमको यहाँ पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रहे, हमें कोई व्यूज नहीं चाहिए। एक बार मैं लाइव लिया, उन्हें लाइव लिया, जो कह रहे हैं ना कि पब्लिसिटी स्टंट है, कम लाइव एंड फेस मी, इट्स अ चैलेंज, ओपन इट एंड आई राइट, रिक्वेस्ट, थोड़ी देर के लिए कोई मत आना जिनको ये लगता है ना पब्लिसिटी स्टंट है, जरा 1 मिनट के लिए मेरे सामने आ जाओ, बताता हूँ कैसा पब्लिसिटी स्टंट है। सो घर में बैठ के टाइप करना बहुत आसान है। हमसे पूछो हम क्या झेलते हैं, वरुण से पूछो उसके ऊपर कितना प्रेशर है, इंडिया से कितने फोन आते हैं उसके घर वालों के। मेरे घर वालों को तो चलो मैंने पक्का कर रखा है कि कब उस लौंडे की लाश मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता उन्हें। पब्लिसिटी एग्जैक्टली, स्टंट। it's not about that. No, Varun, open the lines, open the lines. I challenge these people to come and face me for just to 20 seconds। या पैंट गीली हो जाएगी सच्चाई बताऊंगा तो, कि क्या क्या हुआ इन बच्चियों के साथ। अभी बता नहीं सकता, अभी तो सिर्फ थोड़ी बहुत बातें बताई हैं। बात करते हैं पब्लिसिटी स्टंट। सॉरी and गाइस, हो yeah, गया। नहीं, दूसरी दूसरी चीज, एक एक बार और, वन लास्ट टाइम एक्चुअली, एंड सो दैट एवरीबॉडी लिसन्स टू इट, वन लास्ट टाइम। ये अजय देवगन का कुछ तो एंगल चल रहा है, बहुत देर से लोग क्वेश्चन पूछे जा आएगा, रहे थे। आएगा बहुत जल्दी आएगा, बताऊंगा। उनका नहीं आएगा तो उनकी वाइफ का जरूर आएगा। ओके, ऑलराइट। हालांकि एज यूजुअल हमारा कोई प्लान नहीं था, बट वी आर ओपनिंग इट ओनली फॉर 20 मिनट्स एंड आई वुड इनकरेज। पहली बात मैं आज आई एम गोना से, द कॉमन पीपल जो हमेशा ज्वाइन करते हैं, प्लीज ट्राई नॉट टू ज्वाइन टुडे, लेट यस। अदर्स, सम न्यू फेसेस ज्वाइन। We really want to have them. Second thing, लेकिन आज आज एक ही लिख करता, कोई कॉमन आता है तो वी वुड रिक्वेस्ट देम एंड पोलाइटली कह correct, देंगे कि आप मत आइए yeah, प्लीज। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी मेरी फीलिंग ये है, अभी आई एम नॉट श्योर ऐसा है कि नहीं, पर अगर किसी ने हमारी स्ट्रीम को पहले ज्वाइन किया हुआ है, somehow the tool itself उनको शायद प्रेफर करता है,
और हमारी क्यू में आगे डाल देता है। तो कुछ तो है जिस वजह से वो बार बार आते हैं और बाकी लोग नहीं आ पाते, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई हैव कंट्रोल ओवर गाइस। सो प्लीज मेरे को मत इस पे बैश करना। आई एंड प्लीज स्टिक टू 30 सेकेंड टू अ 40 सेकेंड कॉमेंट। उससे ज्यादा अगर होगा आई विल एक बी। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये शिवम तिवारी, अबे प्रूफ तो दो ना। तू जज है या कोर्ट है? तू मांग रहा है मेरे से? कौन है तू? सामने आ, बताता हूँ तेरे को, प्रूफ देता हूँ। कोर्ट है, जज है, सीबीआई है? ओके सो दम है लाइक ना, सामने आके बात करो। तो राइट। बोल दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। मौत ना सामने खड़ी होती है जब बाहर निकलता हूँ। कौन गोली मार के चला जाए पता नहीं है। बस एंड्रॉइड फोन ले लिया, आईफोन ले लिया, टाइप कर दिया, प्रूफ दो। उनसे पूछना जिनके खिलाफ कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ किया है मेरे खिलाफ अभी तक? किसी की हिम्मत है बात करने की? ब्लॉक करके भागते हैं बड़े से बड़े लोग। ये सवाल ना पूछे। ओके कैरी ऑन वरुण। let's start on a good note. I saw somebody, so I really have to take him. हाँ ये ले, एक आया हिमालयन स्टेलचोन, ब्रिंग मी इन, लेट्स सी योर गट्स। इसको ले, हिमालयन स्टोन को। आजा भाई, आजा। Okay, ओपन है so लाइन, हाँ हिमालयन line स्टोन। open है, line open है। let's calm down a little bit. Vibhor, इसको लेते हैं अभी। नहीं, बहुत The बहुत line is दिनों से open. देख रहा हूँ यार इन लोगों को। Yeah, so line is लेना open. देना कुछ है नहीं, करना धरना कुछ है नहीं, आ जाते हैं बेमतलब में कमेंट करने के लिए, कुछ काम करते हैं। I'm gonna start off with मेरी मेरी okay. I पुट think ऐसे योर तुम सेल्फ चुप इन हो गए Vibhor. माय शूज फॉर 10 सेकेंड। I आटे think डाल के वापस आने जाएंगे। now you'll relax down a little bit. या हाँ जी, Saffron Tiger, welcome. हेलो। हेलो भाई। और इधर देखो, भाई कंग्रेचुलेशन। अपनी बच्ची देखो भाई, अपनी बच्ची देखो। क्या बात है, क्या बात है। हेलो प्रिंसेस। पुंटूस, ए पुंटूस। हेलो। हाय। शी इज डैम क्यूट यार। शी एंड भाई शी वाज स्माइलिंग जब वो फोटो खिंचवा रही थी तेरे साथ। आई नो राइट। One more time if you can do it. Now you're on the big screen. ओके थैंक्स वरुण। हेलो। हाय ए Great. प्रिंसेस। बच्चू, Congratulations. ए बच्चू। ओह माय गॉड, शी इज सो क्यूट। और रहने दो यार, ज्यादा तंग भी मत करो। शी इज द Congratulations. फ्यूचर वॉरियर, शी इज द फ्यूचर वॉरियर। भाई Yeah. मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना फर्ज निभाया और आगे भी निभाऊंगा। जैसा मेरा अपने परिवार के प्रति एक फर्ज है, वैसा मेरा एक एसएसआरियन होने के नाते अपनी कम्युनिटी के प्रति भी अपना फर्ज है। और मैं एक बात यहाँ पे एकदम कैटेगोरिकली कह देना चाहता हूँ कि जो भी लोग कह रहे हैं कि पब्लिसिटी के लिए वरुण और विभोर ये सब कर रहे हैं, उनकी मदर फ्लावर एक कर दूंगा मैं, समझे ना? उनकी मदर फ्लावर एक कर दूंगा मैं। यहाँ पे उनका कोई एक शो बता दो तुम मुझे यहाँ पे, जहाँ पे वो एक एक इंसान को इतना टाइम देते हैं, उनके क्वेश्चंस लेते हैं, उनके फॉलो अप क्वेश्चंस। 5-5 घंटे वो इंसान तुम्हारे क्वेश्चंस सुनते रहता है और तुम सालों बोलते हो कि पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। वो एक पैसे का फायदा नहीं है उसके लिए। एक शो वरुण ने रखा, उसके ऊपर इतना तुम लोगों ने हल्ला कर दिया। किनका इंटरव्यू ले रहा था वो? सिंगर्स का इंटरव्यू ले रहा था, कुछ अच्छी बातें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। हर बार उनको क्यों अपना मतलब एक अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं उसका क्यों सबूत देना पड़ता है? क्यों एवरी सिंगल टाइम हर बार उनको तंग किया जाता है? किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि सामने वाला इंसान अपनी वाली पे उतर जाए, क्योंकि उतर गए ना एसएसआरियन तो फाड़ के रख देंगे। वो मनीष मुंड्रा, उसको भी मैंने बोला भाई, उसको भी मैंने बोला कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था ये सब मदद करने का? कोई जवाब नहीं आया। Wow.
छोड़ो यार, वरुण भाई, विभोर भाई, मैं यही कहना चाहूंगा कि यू शुड नाउ, देखो हेटर्स आर गोइंग टू हेट, Absolutely. अब आप ये भाई तय करो। सुन सुन सुन, तूने बिटिया को दिखा के सारा गुस्सा उतार दिया। हाँ ना भाई, This was so वही। good. This was really very दिस special for वाज लवली सरप्राइज, वेरी लवली सरप्राइज, थैंक यू यार। us. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और मैं यही चाहूंगा भाई कि आप अपना कूल मत खो, बिकॉज ऐसे एलिमेंट्स आते ही रहने वाले हैं, राइट? अगर अगर 10,000 लोग आपके अगेंस्ट में हैं, तो 1 लाख लोग आपके फॉर है, समझे? और बिल्कुल, हमको कोई नहीं रोक सकता, अभी कोई नहीं रोक सकता। एब्सोल्युटली एब्सोल्युट। And hats off to भाई you. तो ध्यान Now, रख, भाई अभी ध्यान रख, आपको, भाभी का ध्यान रख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही मैं कहने वाला था कि hats off to you. इसे भी एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा सबको. You were talking to us when your wife was in labor. Literally आपको एक false alarm भी हो सकता है, but otherwise she was in labor. जब आप hospital पहुंचे हैं and you joined us. When your baby was born, आपने photograph भेजी. Now you're sitting there and still in the hospital and आप join कर रहे हैं. This is what a real SSRian is. This is भाई, what it's about. एब्सोल्युटली, भाई मैं वी शुड मजाक गिव अ नहीं कर राउंड ऑफ अप्लॉज। Absolutely. This really deserves it. Great. भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, चलो, मैं इतना कनेक्टेड हूँ एसएसआरियन फैमिली से। मुझे, मेरा एक दोस्त भी है, वो ही डज नॉट लाइक टू कम ऑन द फोर फ्रंट, वो हमारे जैसा नहीं है थोड़ा, लेकिन वो भी हमेशा पूछते रहता है कि वरुण कैसा है, विभोर कैसा है। क्या बात है. बट ऑब्वियसली मेरा आप लोगों के साथ इतना कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट होता नहीं है, बट मैं ये शो बिल्कुल मिस नहीं करता हूँ। पिछले 2 दिनों से ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं है, मुझे वो 5 घंटे वाला रिकॉर्डिंग देखने का है, बिकॉज आई हैव हर्ड इट हैज क्रिएटेड हैवॉक, तो मैं वो देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा। और आप दोनों अपना ख्याल रखिए, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे आपके एबिलिटी पे जरा सा भी डाउट नहीं है और कभी भी नहीं रहेगा। और ऐसे जो चादर मोड लोग मिलते रहेंगे ना, उनकी मैं मदर फ्लावर एक करते रहूंगा, ठीक है? Wow. सैल्यूट है भाई, Very well ये चलो said. भाई, ट्रू ठीक हिंदू है, Thank you. टॉपिक टाइगर। टेक केयर, हाँ, जय Absolutely. टेक हिंद, केयर। Yeah. और Yeah. कुछ काम होगा जय वरुण हिंद, वॉशिंगटन डीसी में, डू लेट मी नो, ओके? डू लेट मी नो, कुछ भी हो, Absolutely. ठीक है? Absolutely. Absolutely. एब्सोल्यूट। Take care, चलो man. भाई। Take care of भाई your family. भाई And God प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ मीटिंग करा दे, किसके साथ? ट्रम्प के साथ। ट्रम्प के साथ? अरे यार, उसके लिए मेरी क्या जरूरत है, अपने मोदी काका है ना, वो तो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, राइट? बस तुम्हें पीएमओ चल को टैग करना है, बाकी हो जाएगा, सब हो जाएगा। All right. चल, तू ध्यान दे, अपना बिटिया का Right. ध्यान दे। Yeah. Take बिल्कुल care. बिल्कुल भाई, We'll, ठीक है, we'll आप लोग talk. भी ख्याल रखो, बाय। Sure. All right. Thanks, man. Thank you so much. This was really good. And this is रेडी what गो। keeps us going. Yes. All right. Prerna ji, welcome. Hi, Vibhor. Hi, Varun. I don't Hello. know if you remember me. I was there last time. Yes. बस बहुत कम टाइम था तो मैं कुछ पूछ नहीं पाई थी। आज के मेरा लाइव स्ट्रीम में आने का मकसद कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं पिछली बार भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट मेरा सिर्फ सारे एसएसआरियन से और जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी को भी इस मुहिम में डाउट ना करें। अगर आप उस मुहिम में हैं तो 100% रहिए, नहीं तो you are free to have your own choice and own views. I can just give you an example. I live in Dubai and जिस दिन रिया अरेस्ट हुई थी, मैं अकेले गई थी डिनर पे अपने आप को ट्रीट देने, अरे एंड वाह, जैसे ही विभोर से या किसी सोर्स से, हाँ, जैसे ही वो वीडियो लीक हुई थी जिसमें क्या नाम है, सुशांत का कुछ गलत दिखाया था, you will not believe I fainted in the restaurant. So Oh this my is God. how connected I am with this cause. So please I request you, and I have so many people who are putting these videos. Please don't do that, please. Thank you. थैंक यू प्रेरणा। Thank you. All right. Harsh, आज का show तो I think is gonna be. हाँ जी, Manjula ji, welcome back. Hello, Varun ji. Hello, Vibhor ji. नमस्कार मंजुला जी, वेलकम बैक। Yeah, you guys are doing a great job. Thank I you. had थैंक यू stopped. सो
I had stopped seeing Amir Khan's movie, once when he said, "My wife says, if we are safe in India," and I'm Yep, never going to watch any one of these fellows' movies anymore. I have absolutely. enough things to reading. I'm an avid reader. I will read, do something else, take care of my children. If we common people can think and assume, like the crime scene has to be seized everything, why the Mumbai police could not think of all that? Common man ko pata hai, small, small things, evidences. And with so much of audacity and daringness, Mumbai government, Maharashtra government is challenging everyone, trying to hide things. The This is only so, person they are not challenging is Varun and Vibhor. I know, Yeah, guys. That's why and we are, I and talk to you guys. they, we really want them to challenge us. No, no, no. That is why they're coming from the back door, no, offering money, everything. They don't have Yeah, face to come challenge. absolutely, Manjula I ji. have to tell you my friends in Dombivli. I used to stay in Dombivli earlier. It was Ganeshotsav time, and Shiv Sena people came to collect money, and they, like demanded certain amount. I refused to give them. They said, "हाँ देखा जाएगा तुमको." I said, "Kya?" I was new to Mumbai. I never knew Shiv Sainiks were so strong. I said, "क्या करेगा तुम? You can't force me to give money. जितना हम हमारे बस में होता है उतना देगी. What, you're scaring me or what?" They just gave me This a is look at my. now this is the true face of Shiv Sena. It happens. It happens. I have faced this. And unfortunately, Thank you, that day, Manjula my ji. Thank you, husband went out thank in you the so crime. much I for forgot. for Came early in the morning. You just imagine what is my plight that night. I was really scared. कुछ हुआ क्या क्या है इन लोग ऐसा डरा के गया. Everywhere, like Marathi manus बोलते हैं, but they don't maintain the बाला साहेब का जो values जो भी था. And when you said, like Vibhor ji, I've got go ahead from Delhi, I was so happy. I was so happy because the moment Shiv Sena backstabbed BJP when they had pre-poll alliance with BJP, they sided with the NCP and Congress. This we should never forget, like Modi ji ka jo bhi army absolutely hai yes. there, we should never forget. And Amit ji is called the modern day Chanakya, na? I think he has not forgotten this. हर दिन Let में me tell you one भगवान को thing. दिया Let जलाते. me tell you. Let me tell you one thing, Manjula ji and everyone. एक मिनट के लिए मोदी जी माफ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं माफ करते किसी को. I Yes, assure yes, you. Vibhor ji. उनको मैं, Totally. he doesn't forgive people who I've analyzed his work for last 20 years, of the last 20 years. So I know he won't forgive. He won't forget and he won't forgive. That is Okay. for sure. I'm going to interject right now. I saw this personal message from Saksham. Even though I respect everyone's time, but he's taking a half-hour break from his work, and he really needs to get back. So uh, before I get to you, Saksham, Manjula ji, anything else you want to say? Just one word. Huh? When I heard that, like behind the scenes, it's settled not to bring out baby penguin's name, not to spoil his political career, everything. I was just hoping against all odds that, I mean, should not, think of this shortcut. He should think of the long term.
thing and clean up the society, and which we are seeing it today. Thank you, Well, Vibhorji, for that, like confirmation from you and all right. all the Thank you. SSRians, with you guys. Thank you. Have a good day, guys. Thank you so Thank much. you, ma'am. Thank you, ma'am. Keep your blessings on. All right, Sakshamji, please go ahead. Hi, good afternoon, Varun and Vibhor. Good Uh, afternoon. I'm Saksham, and I thank you so much for bringing this platform, first of all. And Vibhor, the way you tell things, it's like really, really enlightening. And the first show that I saw from you guys, I was like literally linked to it. And I'm right now in office with half an hour break, and I thought of connecting with you guys. But then the work that you guys are doing is awesome, splendid. um, the way Vibhor you come out from your heart, that connects automatically. But I don't know the things that you're telling. Uh, how soon, or I know that's a weird kind of a question that I'm asking you, but then in India, I came from India like 5 years back. Um, and now the only question that's going in my mind is how, which everyone SSRian would be thinking would be like, how much time is it gonna take? Is it gonna take 1 year, 2 years, 3 years? I know it's not the right question to ask you, but it's a question which I want to ask. Like, uh, though we are seeing some progress happening, but every single guy would be into this. That how fast can the government clinch these guys now? Uh, Honestly, Saksham, it would take time. I won't give any false hopes to anyone. I have never given any false hope. तो आज भी नहीं दूंगा. It would take time. It is a mess of more than 60 years. Yeah, So it would take at least a complete cleanup would take at least some years to but honestly speaking. I won't. yeah, the way you assure things, it's really really enlightening, and I we feel satisfied. uh, कुछ एक्शन तो हो गया शुरू. uh, Absolutely. yeah, the way you're telling things, it's like if these guys have really their conscience is no more. They have left their conscience back behind. Absolutely. It's all eaten up. Yep. And Vibhor has True. been saying that, for the last 10 days, today is the 10th day actually. Okay, this cleanup will happen now. All thanks to Sushant. Unfortunately, he had to lose his life. Unfortunately, we are all getting to a point where we all are so frustrated. But at the same time, अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि अब ये क्लीन अप होके ही रहेगा. बहुत बड़े बड़े नाम ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आने वाले हैं. और मैं on to a lighter note, every single day when I talk to Vibhor, हमारे chat से पहले मुझे लिटरली ऐसे ऐसे शॉक मिलते हैं जो मैं मतलब I'll be very honest tonight. Actually, आज I haven't slept. I've been up the whole night क्योंकि इतना कुछ चल रहा है, इतनी सारी डिटेल्स आती हैं, इतनी सारी बातें होती हैं. And it is really really heartbreaking कि हमने इतना It पैसा was it was 5 in the morning at his place. And कहता है मैं सो जाता हूँ. मैं पागल है कि अब सो गया तो उठेगा नहीं, जगह रहे. I know, मुझे ऑफर कर रहा था, मुझे Vibhor was offering let's do a live right now. मैंने कहा ना भाई, अभी कमिट कर दिया सबको 8 o'clock. Now let's just stick to that. But yeah, this is Just all. to make him awake. Yeah, so अभी जैसे हमारे साथ Saffron Tiger, हम उनको Saffron Tiger ही बुलाते हैं, but he is so committed. बेटी मतलब बच्चा पैदा होना है, wife was in labor, hospital के अंदर बैठा है outside of wife's bed, and he is connecting to this live stream and he wants to talk. Incredible. That is Incredible. what it is. That is And huge. the first person who he sends the photo is me. Exactly. Imagine. So let's No, keep thank this you. going. Let's keep this Thank you so much, guys. Thank you so much for the Sure. wonderful thing that you're doing right now. And I hope to connect you soon, and hope we get the things right for SSRE and justice. And Absolutely. justice to milke rahega. That's for sure. वो तब मिलके रहेगा. Absolutely.
Thank बिल्कुल. you so much, Thank you Varun. so Thank much. you. Take care. Get Thank you, back to Vibhor. work. Enjoy your lunch. Thanks. All right, Raman, go ahead. Hi Vibhor, hi Varun. Hello. विभोर जी, Yeah. आपका तो पागलपंती अभी ऐसे छाया हुआ है कि लोग पहले स्ट्रेंजर्स को क्रिकेट का स्कोर पूछते थे, अब पूछ रहे हैं कि विभोर का ट्वीट आया है कि नहीं. क्या बात है. This deserves huge round of applause. क्या comment मारा है. इसको तो मैं meme बनाऊंगा. Thank you, sir. So Thank you so I will much. not take much time. I have two quick questions. First thing is आपने बोला था कि बॉलीवुड में सॉरी विराट और अनुष्का का भी मतलब शादी का जो था इन्वेस्टमेंट वो सब भी वहीं से आया था, दुबई लिंक था उसमें. So first thing is was deliberate or like उनको जबरदस्ती like they had to accept this inflow of money? It is my first You question. give something, you And my give something. वो लेन देन है जी ये सारा. टोटल प्रोफेशनल. उसने शादी का खर्चा उठाया, उसने मतलब चैंपियन ट्रॉफी हरवा दी. सेम टू सेम. okay, As simple as that. You give something, you take something. okay. And Yeah, please carry on. Go ahead. Looks like आवाज आ रही है आपको? hello, can you hear me? My second question is because of CBI का, how badly like the drug trafficking, child trafficking, all this has affected. So this is my second मैं question. पूरी तरह से How मैं badly it पूरी is तरह से affected now? नहीं. कैन यू रिपीट द एंटायर क्वेश्चन? मैं आधा ही सुन पाया. Yeah, sure. Because of this current investigation going on of NCB, ED, Your and voice is CBI, all cutting. these things, how Your voice badly is is the tracking? And okay, I'll type it in the chat box. Okay. all right. Can I? Shall I repeat it? Can you hear me now? Last try. Go ahead. Okay, because of this current लेकिन investigation of मेरे को CBI, समझ में ED, आ and गया. I've understood the question. You Okay. can go offline. All right. Take your answer offline. Thank you so much. Yes, it has been badly affected, but yes, at the same time, it is the business is running on. Okay. So who's next? नमस्ते Yes, विभोर Mehak. जी. Mehak Anand. नमस्ते विभोर जी. नमस्ते वरुण जी. Oh, Hello sir, how are you? I'm good. आपके comments पढ़ रहा था मैं. That's why the CBI should hire Vibhor Anand. Yes sir, I mean it from my heart because I think मैंने कल भी कहा था कि आप गट्सी तो हैं सर, एंड आपने आज एक न्यू केस भी पूजा मिश्रा जी का लिया जो, एंड आई थिंक दैट्स अ huge round of applause we like to give you as well because not everybody has supported her unfortunately. But sir, I had a quick few questions जो मैं आपसे कल नहीं पूछ पाई. सर आज आपने जैसे श्रीदेवी जी की डेथ के रिगार्डिंग बात की, सो मुझे आपसे पूछना है सर, लाइक जो नेपो किड्स होते हैं, आपकी अवेयरनेस है सर कि इनको लाइक आइडिया भी होता है कि इनके खुद की पेरेंट्स या सिबलिंग्स या व्हाटएवर ये सब उनको सब पता होता है कि कैसे हुआ है, लाइक रियलिटी पता है सर उनको? मैं जब हम इट्स लाइक आवर ओन फैमिली. जी सर. जैसे मुझे स्कूल से बताया गया था कि यू हैव टू डू लॉ. मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि पापा को ज्वाइन करना है. तो जैसे हमें एक ग्रूमिंग दी जाती है ना इस चीज, तो इन लोगों को भी शुरू से ग्रूमिंग इस चीज की दी जाती है दैट यू हैव टू बी अ पीडोफाइल, यू हैव टू बी अ ड्रग एडिक्ट. तो इस शुरू से देखता है. Okay, so मतलब sir, it's not like new for them, like they, I mean कि पूरी world जब Not बात कर रही at है means all. already they know what has happened with their mother or fathers or siblings, like they are aware of the whole racket. I would say racket only. Absolutely. वरना आज तक कोई ना कोई बच्चा तो सामने आ जाता है कि I haven't known this. Yes sir, they none of them have spoken against it, none of them have written any hashtag also. आपको आपकी फैमिली के बारे में सब पता होगा. बचपन से लेके जवानी तक आपने सब कुछ देखा होगा, एनालाइज किया होगा. वैसे ही ये लोग. अब ये देखिए ना, शाहरुख खान का बेटा और अमिताभ बच्चन की नवासी, हाउ दे वर फॉट.
तो उन इनको तो शुरू से ऐसी आदतें डाल दी जाती है ना। उनका तो एक्चुअली क्या सर इन हाई लेवल सोसाइटी में ये टैबू नहीं माने जाते। हमारे यहाँ पे अभी भी सेक्स के बारे में बात करने के लिए बहुत सोच समझ के घर वाले बात करते कि वी शुड टॉक और नॉट। अब थोड़ा चेंज आ रहा है कि मिडिल क्लास फैमिलीज आर गेटिंग ओपन विद देयर किड, दे आर टॉकिंग, दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग ओपनली विद देयर डॉटर्स और चाहे वो सैनिटरी नैपकिन हो। अब दिस इज अ वेरी गुड स्टेप कि लाल किले के मंच से द प्राइम मिनिस्टर वाज टॉकिंग अबाउट सैनिटरी नैपकिन। दिस इज द न्यू इंडिया। आज तक किस प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बातें करते हुए देखा आपने? नहीं सर। तो द टैबू इज नाउ गेटिंग रिमूव्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कोर वैल्यूज को भूल जाए। हाँ जी। मतलब कि अगर मैं स्मोक करता हूँ, मेरे घर वालों को पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी तरह अपने बाप के सामने स्मोक करना चालू करूँ। So this is a value that whenever my father comes in front of me, either I hide the cigarette, उनको पता होता है सिगरेट पी रहे कमरे में बैठी, हाँ जी। तो वो खुद ही एक कभी कभी होता है खुद ही चले आते देख के कि आप सिगरेट पी रहे, पी लो, शांति से, बहुत काम करता है। नहीं, Okay. मुझे तो लगता है Sorry, I'm just gonna cut. Before एक request है actually, and it doesn't have to be right now. आप अपने फादर की बहुत सारी बातें और बहुत कुछ करते हैं. If he could sometime, एक बार हमारे सामने आके एक बार सबको एक बार हेलो कर दे, would be great. Sure. Go ahead, man. सर मेरा दूसरा था विभोर जी के लिए दैट आई हैव नोटिस सर कि लाइक काफी लोग मतलब अनफॉर्चुनेटली आई विल से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट लोग आपको गूगल सर्च करते हैं, so, आपका मतलब पेज पे सर्चेबल नहीं होता, लाइक आपका कोई विकिपीडिया पेज नहीं है, सो लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर कि आपका वर्क के रिगार्डिंग मैंने नाम भी सर्च किया तो वो आपका ट्विटर हैंडल पहले दिखाता है विच इज गुड इनफ फॉर देम, बट वो रिलेट नहीं कर पाते। You're mute, Vibhor, आपने किया, मैंने नहीं किया. हाँ जी सर, should I repeat my question? No, I did, क्योंकि मैं फेक न्यूज नहीं फैलाता, I give the real facts, इसलिए मेरा नाम नहीं है। अच्छा सर, नहीं क्योंकि वो पूछते हैं कि वो उनको याद नहीं आता है, क्लिक नहीं करता एकदम से, वो एकदम गूगल पे नाम सर्च करते हैं लेकिन वो ट्विटर अकाउंट आता है, सो दे डोंट मे बी रिमेम्बर, बट आई थिंक आप सर बहुत पॉपुलर वैसे ही हो जाएंगे, आपका पेज हम खुद ही बन जाएगा अब आपका। Thank you. For searching as well. You brought a good point. Actually, if there are any writers of Wikipedia who have access to create page, go ahead. That's a good suggestion. Yes, sir, because if वो लोग यही लिखेंगे, he was a rapist को डिफेंड किया, ये किया, वो किया, they won't write the reality. Which is, नहीं सर, मेरे को तो लगता है आप सर बहुत उस चीज उससे भी ज्यादा आप सर माने जाएंगे, वो ये तो आपका ये केस था, आप तो सर वर्ल्ड को बदल रहे हैं, आप इंडियंस को सब साथ में ला रहे हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू write about you. And so my last question would be that are there any proper sir way where people like common citizens, again sir this was a question from my mom, that for common citizens when they want to complain, like they know anything, आपने कल से lawyers के regarding बताया था, they cannot afford, then they can fight for their own case, but sir जैसे उनकी खुद की protection कैसे हो सकती है for common man, जैसे जिनको कोई एविडेंस है या कोई चीजों को मालूम चलती है, तो सब पुलिस पे तो थोड़ा सा नहीं है ट्रस्ट लोगों को, तो अब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनको ट्रस्ट पुलिस पे नहीं होता, तो वो किधर जाए सर, या कोई ऐप लॉन्च हो सकती है सर वेयर दे कैन डिजिटली रिपोर्ट विद कंसील्ड आईडी टू बी सेफ? ऑनेस्टली इसमें एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट बना है, लेकिन अभी तक उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। ऑनेस्टली इट इज नॉट एज इन विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे यूएस में बहुत स्ट्रांग है, उनकी आईडीज बदल दी जाती है, उनकी आइडेंटिटी बदल दी जाती है, फिंगरप्रिंट्स बदल दिए जाते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ऑनेस्टली वी आर डेवलपिंग डिजिटली एवरीथिंग, सो राइट नाउ आई कैन नॉट से कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एनोनिमसली, कई ऐसे हैं कि एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वहां पे ये प्रोविजन है कि आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया करते, जैसे सीबीआई है वहां नहीं करते, आप इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो अगर आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो यू कैन लॉग इन टू द
NIA वेबसाइट और CBI वेबसाइट, और सबसे आसान तरीका ये है, सीधा PMO को भेज दो भैया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ज्यादा सेफ आप कहीं नहीं हो इस देश। Great. गो And ऑन sir, द अभी प्राइम live मिनिस्टर ऑफिस ऑफ। हाँ, आंसर जो आप लाइव बात कर रहे हैं, जैसे वरुण जी के शो से या किसी के भी शो से, आप कोई डिस्कशन हम लोग जैसे सर लाइव बात कर रहे हैं, my only last वो question डार्क would be वेब पे कि वो डार्क is वेब the पे। dark web watching us right now? Because यस, you can यस, disclose, यस। they can, right? So उनके लिए ये तो कुछ भी नहीं होगा to कुछ access भी the नहीं है। conversations. यस, हाँ दे जी, कैन। they can. Okay, so तो बट मतलब it's just डोंट बी हाँ जी, अफ्रेड। वो मेरे को no sir, टारगेट I'm करेंगे, not. आपको नहीं करेंगे। नहीं सर, आई एम नॉट अफ्रेड सर, आई एम लाइक यू, फियरलेस होना चाहिए, एंड तब वरना सर तभी फाइट किसी के लिए भी आप करेंगे, एंड अरे, आई जस्ट अरे वांटेड टू आस्क यू दैट. आनंदों का खून है, फीयरलेस तो होना ही है। थैंक यू सर, All थैंक यू right. सर, Thank you so much. थैंक यू वरुण जी, Sure. Take care. थैंक यू जय हिंद सर. All right. Go Hi, ahead. hi Vibhor. Hi Varun. You guys are doing हेलो। amazing stuff. My name is Avinash Shukla. So I'm a big SSRian. मैं बहुत शुरू से आप लोग को फॉलो कर रहा हूँ, एंड आप लोग जो भी खुलासे कर रहे हैं बहुत कमाल के हैं. अब फर्क ये हो जाता है कि आई एम कनेक्टेड टू बॉलीवुड इंडस्ट्री फॉर more than 10 years now. मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे आर डायरेक्टर्स, दे आर इनटू प्रोडक्शन हाउस, दे आर इनटू आर्ट डायरेक्शन, दे आर इनटू फैशन डिजाइनिंग. सो मुझे बहुत सारी अंदर की ऐसी ऐसी बातें पता चलती है. इफ आई कम मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताता हूँ तो वो लोग शॉक हो जाते हैं. वो लोग बोलते हैं कि नहीं, तू जो बोल रहा है गलत है यार, ऐसा कैसे हो सकता है. सो अब जब आप लोग यही सारी बातें बोल रहे हैं बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बारे में, सो अब इन लोगों को बिलीव हो रहा है कि नहीं, बॉलीवुड में एक्चुअली इतनी ज्यादा गंद फैली हुई है. तो मैं आपको एक बहुत कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ. तो मेरा एक फ्रेंड है, ही वर्क्स फॉर अ मीडिया कंपनी. सो वो गया था एक सुपरस्टार का इंटरव्यू लेने, एंड वरुण सर मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा विद द नेम्स कि कौन से सुपरस्टार को वो इंटरव्यू लेने गया था. सो वो वहां जाता है, एंड दैट सुपरस्टार वाज रेडी टू गो फॉर सम पार्टी. सो बोला कि ठीक है, यू होल्ड ऑन, मैं अभी आधे घंटे में आ जाता, आधे घंटे में आ जाता, आई विल गिव यू माय इंटरव्यू और व्हाटएवर बाइट्स यू वांट. So my friend waited for 3 to 4 hours, and midnight के बाद around रात को 2:30 से 3 बजे that superstar came and he was full drunk. पता नहीं सिर्फ दारू पिया था कि और क्या क्या नशे किया था. And plus this guy came with a superstar lady actress which is supposed to be girlfriend of another superstar. And वो उसको अपने घर ले जाता है. So these incidents, ये सब हम लोग को सुनने में आता है कि that guy told me कि इनका पूरा फैमिली पूरी तरह से बर्बाद है. अभी जैसे टोटली कि मैं कुछ कमेंट्स अविनाश, मैं बता रहा हूँ, रात को किसकी बीवी, किसकी बेटी, किसकी बहन कहाँ होती है किसी को नहीं पता होता. ऑनेस्टली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ये नशे में कहाँ होते हैं, सुबह कहाँ उठते हैं, इन्हें खुद नहीं पता होता. यस, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स सर, वो फैशन डिजाइनर है. सो शी टोल्ड मी कि जब मैं कहीं काम मांगने जाती हूँ, सो वो लोग डायरेक्टली ओपनली बोलते हैं. ये तो बात हो गई जो बड़े सुपरस्टार बड़े लेवल पे जो चल रहा है, ऑल दिस सेक्स थिंग एंड ऑल. लेकिन जो छोटे लेवल पर भी है, वो भी कहीं काम मांगने जाते हैं तो उनसे डायरेक्ट बोला जाता है, डायरेक्ट विदाउट एनी हेजिटेशन, कि यू हैव टू कम ऑन बेड टू गेट द वर्क. सो सर ये एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी गंदगी है. नीचे तो इनफैक्ट और ज्यादा गंदगी है. ये लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जो न्यू कमर्स है या न्यूली पीपल केम टू बॉम्बे. वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ अपकमिंग डायरेक्टर. उसने सिर्फ एक फैशन डिजाइनर को इसलिए नहीं लिया बिकॉज वो फैशन डिजाइनर की एज 40+ थी. ये टोल्ड मी कि अरे यार वो तो बुढ़िया है यार, मैं उसको नहीं लूंगा. Those kinds of words I'm hearing. So which is very shocking for me as well. So मैंने भी सर अब खुल के बोलना चालू कर दिया है, and I will definitely वरुण सर, I will inbox you with all the names कि क्या नाम है क्या नहीं है, सारी डिटेल्स के साथ. करना चाहिए, बैंड बजाना चाहिए, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए. You know, this is Exactly. really shameful. This is really, हमने इनको भगवान. I am taking a 2 minutes break. I need to take a call. Sure. Okay. All right. So yes, thank you so much. You know, आप ये शेयर कर रहे हैं, and yes, connect.
करें. Actually, I should be putting up the Telegram app का link भी. So एक चीज आप भी बैठे हैं अभी, आपके साथ भी मैं करूंगा कि there is हमने WhatsApp group शुरू किया था, but WhatsApp has a limitation of about 257 people. And जैसे ही मैंने second group बनाने की कोशिश की, Vibhor suggested let's not do that because then it will become unmatched in manage नहीं हो पाएगा हम सबसे. So now we are definitely focused on Telegram. We are about 3,000 plus SSRians. Last जो मैंने check किया था रात को. I'm sure we are bigger than that right now. तो please I post the link. आप Telegram में आए, वहाँ से आप direct message भी कर सकते हैं. That's an easier way out. So, but let's all get connected. Let's share updates. Let's share all the information, and let's keep on exposing these people. Yes, definitely. Because so sir, when I was only 16-year-old, I went to Mumbai right after my school and for acting thing and all. And उसके बाद I went outside abroad for my graduation. But जब मैं वापस आया and then I saw the same thing is happening. In fact, ये कचरा और गंदा हो चुका था. Or so like right now I live in Mumbai, so it is very hard. I know my friends who are into acting, वो लोग ऑडिशन पे जाते हैं and there are men, आदमी लोग हैं, they are asking for sexual things to my friends. They said कि नहीं, रात को फोन करते कि अरे भाई क्या कर रहे हैं. They said कि कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे हैं, चिल मार रहे हैं. So they told him कि ठीक है आजा, वो रूल की बात करी थी ना, बट तू आज बहुत सेक्सी लग रहा है, ये वो है करके दे स्टार्ट टॉकिंग सम बैड शिट. सो दिस इज एकदम नीचे से लेकर एकदम ऊपर तक कचरा है. तो सर मुझे ऐसा लगता है कि पहले नीचे का भी कचरा साफ करना पड़ेगा तो ऊपर वालों को अकल आएगी. आई नो, नीचे वालों के लिए हम सब जिसे कहते हैं ना कॉमन मैन है ही है. ऊपर वाले के लिए आई थिंक विभोर जैसे लोग आ जाते हैं जो पूरे ऊपर के लेवल के नाम ऐसे निकाल रहे हैं कि हम इन सबको डेफिनेटली नॉट ओनली एक्सपोजिंग देम बट आल्सो क्लीनिंग देम अप. बहुत जल्दी बहुत कुछ होगा. So great. Thank you so much for joining. Thank you, sir. Connect again. Take care. Yes, sir. All right. While we are waiting for Vibhor, obviously I'm gonna take a couple of people I'll add, and then you could talk a little bit about yourself. So Sarika ji, where are you from? And prefer तो हम करते हैं कि you have your video on, but if that's not okay with you, it's okay. First of all, I would like to congratulate you both, Vibhor and Varun, for doing such an amazing job. I am from Canada, from Winnipeg, and I am an IT professional. और मुझे अभी रिसेंटली ही मैंने ये आपके वीडियो चैनल के बारे में मुझे पता लगा. मैं सुशांत सिंह केस का जो केस है दैट आई वाज फॉलोइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बट उसी के रिगार्डिंग आई वाज सर्चिंग ऑन द वेब एंड आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट यू गाइस. और अभी मुझे सिर्फ 2 दिन पहले ही पता लगा है, तो मुझे इतना नहीं मालूम कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों का प्रोफेशन क्या है. तो मेरे यही कुछ क्वेश्चंस थे कि आप लोगों का लाइक मेन प्रोफेशन क्या है. इज इट लाइक द यूट्यूब चैनल यू गाइस रन एंड व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू टॉक अबाउट? Okay, I let Vibhor answer his part, and but for me this is, it has been going on as a passion and it is still a passion. मेरा एक रेडियो स्टेशन पे एक रेडियो शो है, द वरुण कपूर शो. आप ये स्क्रीन पे भी देख रही होंगी. मेरा हैंडल है आरजे वरुण एंड मेरा शो है द वरुण कपूर शो, जहाँ पर मैं आई जस्ट यूज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू यंग टैलेंटेड किड्स मे बी और आर्टिस्ट, चाहे वो गाना गाते हैं, डांस करते हैं या एंड उनको एक प्लेटफॉर्म देना, बेसिकली एक रेडियो के स्टेशन के थ्रू शोकेस देयर. क्योंकि मैं सिर्फ रेडियो ऑडियो पे नहीं करता था, रेडियो के साथ मैं फेसबुक लाइव भी करता था, एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 3 years नाउ. But that is not my profession. I am not an RJ by any means, like a professional RJ. मैंने कोई ट्रेनिंग, कोई वॉइस मॉड्यूलेशन मैंने कुछ नहीं सीखी है. आई एम जस्ट लाइक यू गाइज. आई हैव अ फुल टाइम IT job, and I work for an IT company here in Silicon Valley. That is my main job. This started off as a passion, is continuing as a passion, but the amount of time and effort I'm putting right now in this doesn't look like, ab to mere ghar wale bhi, they've started also saying ke, I'm spending way more time here. But right now, I think it's all because of Sushant Singh Rajput, nothing else. But going forward, once we get everything done for Sushant,
there are so many things happening and people have contacted जिनसे भी मैं बात करता हूँ, चाहे वो श्रीदेवी केस पे जो फॉलो कर रहे हैं, या not only stars, एक अजिताभ करके जो है, जिनकी जो who has been missing for the last 3 years. I think people want us to bring those issues to the forefront. Looks like, there are YouTubers, the so-called YouTubers, जो शायद बहुत पैसा बनाते हैं, और they are like, minting money by creating crazy videos. We all love them, ऐसा नहीं है कि हम entertain नहीं होना चाहते. But I think this is one thing which I never thought I would do. And initially, I'll be very honest, I thought maybe I was just plotted somehow, और कैसे plot हुआ मुझे भी नहीं पता. But now it has become more like a moral responsibility. अब like I said, I haven't slept. रात को काफी सारी चीजें, ऑफिस का भी देखना होता है, काम भी देखना है, and at the same time, right now also I have to finish off this very soon so that I could get back to my regular life. But that's what I do, and that's what my main kind of field is. That's good to know. तो मुझे एक और सवाल था, जिस तरह से लाइक आप लोगों के नेम यहाँ पे एक्सपोज कर रहे हैं, तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसकी वजह से, और अभी तक आपने कोई ऐसा कोई चैलेंज फेस किया है? चैलेंजेस तो बहुत होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. सबसे बड़ा चैलेंज तो है कि बोथ साइड्स ऑफ माय फैमिली, दे आर काइंड ऑफ, बहुत कॉल्स आती हैं. अब तो ऐसा हो चुका है कि मैं कईयों की कॉल्स ले भी नहीं रहा. वो भी देख रहे होंगे और वो भी सुन रहे होंगे कि अब समझ आई क्यों नहीं उठाया, बट that's what it is. So that is a challenge. The other challenge is, of course, everybody is worried. I'm also a little scared. I'm also a little worried because we're doing this and we're exposing such big names, and we all know what all these people can do. But at the same time, I think, मैं ये radio station पे जो करता था, I've been doing it for the last 3 years. Fun, entertainment, music, हर जगह, is important, and we'll continue to do that. But at the same time, I think as a moral responsibility, these topics or these issues are also important. So क्या risk होगा, क्या नहीं होगा, अभी तक the only thing that I have observed is मेरा internet को block कर देते हैं या choke करते हैं. Somehow it happens even in while I'm here. So I think that's the only thing I've observed as of now for the last 10 days. उससे ज़्यादा भगवान ना ही करे कुछ और हो, and I'm keeping my fingers crossed. But at the same time, I've been given a lot of confidence by Vibhor. And Vibhor ka, I think by profession, we all know he's a lawyer in Supreme Court. So I'm pretty sure all the data that he's sharing, he has all the support backing. And if he's using this platform, if he's on my platform, I am sure he's there to take care of everything, and I don't have to worry. Thank you very much for sharing all the information. Sure. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपना वीडियो शेयर नहीं कर रही बिकॉज मुझे कल ही आप लोगों का लिंक का पता लगा, और मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, ये देखो कि ये गाइज आर डूइंग सच अ कमेंडेबल जॉब. तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इन सब चक्करों में मत पड़, तेरे 3 बच्चे हैं, ये सब चीजें मत ज्वाइन करो. और अभी आप यू वॉन्ट बिलीव, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है और मैं चुपके से यहाँ पे आपका पास ज्वाइन किया हुआ है बिकॉज आई वाज सो मच इंटरेस्टेड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. Wow. All right, but हमने force नहीं किया, so even to your husband, when he watches or he listens, I would encourage him also to connect, and not get scared and not get worried. I think this is the problem that our society suffers from. कि किसी भी ऐसी चीज में जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, डरते हैं, and I think we really need to get out of that mold. So you should definitely suggest him. और अगर ज्यादा डर लगे तो उन्हें विभोर का नंबर दे देना, let him talk to विभोर. मैं वही बोलने वाला था, सारे का जी अपने हस्बैंड को बोल दो मेरे से बात कर ले, सारा डर निकाल दूंगा. नहीं कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगी आपके नेक्स्ट वीडियो में उनको भी लेकर आऊं. क्या बात है, एब्सोल्युटली. कल शाम 8 बजे. ठीक है, बिल्कुल जरूर जी. Thank you very much. Cool, thank you so much. All right, Mohit, please go ahead. Hey, hi Varun, hi Vibhor. Fabulous platform Varun, I would like to say first. मुझे recently पता चला आप लोग के initiatives के बारे में, and Vibhor, I saw your comments and your revelations. Bollywood में जितना filth है ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, parents कहते रहते हैं कि दूर रहो, but of late, in last 10 years जैसे realize हुआ है कि the kind of monopoly Bollywood is, showing in India, trying to represent the film industry all over the world, और कैसे fake narratives एक के बाद एक peddle करने Bollywood कर रहा है. I've been following a blog by Ajit Wadakal,
if you would like to, because even I've been noticing hundreds of revelations from this guy, and we have understand that कैसे Bollywood खान्स और कपूर्स की मोनोपली का एकदम दबाव में आ गया, and this death of Sushant Singh has acted as such a big catalyst. It's unbelievable कि क्या कुछ जुड़ा हो सकता है इससे. I mean, half the people are not even realizing why धोनी, जिसके बायोपिक में उसने काम किया है, has not even uttered one word for this guy. I mean, I don't know how in any country such things can happen. So True. it's really surprising to see no effort from the Bollywood, no effort from the politics, no effort from anybody in a celebrity front to come out, support, barring Kangna, barring Arnab, because they had their issues. Arnab had that instance of where the police caught him for pointing fingers at the Congress president. So he's now taking out his with them. Right. I mean, Yep. there's only one channel showing this, and all others are just copying because they have to show that it's not just one channel. Absolutely. I think everybody is trying to showcase their own agenda या अपने agenda को satisfy करने के लिए अपने Absolutely. Even I am. I'm agenda driven. My agenda is to clean the Bollywood. Exactly. I mean, ये monopoly जो है Bollywood की, I mean, we have learned a lot of facts from lot of revelations from Vibhor, but we have been for years been seeing getting a lot of revelations from Captain Ajit Wadekar. I would urge you to look at his blog, see what he's been writing. जैसे विभोर जी हैं, मैं आपको एक कोट करता हूँ, विभोर जी आप शायद लाइक करेंगे. What someone has written is that in times of universal deceit, speaking truth is a universal act. अब आप जो बोल रहे हो ना, हम श्रद्धा पे ले रहे हैं. जैसे उन्होंने कहा है, आप चाहे प्रूफ दे ना दें, तो गुलशन कुमार, जिया खान, परवीन बाबी, एंड देन महेश भट्ट का नाम जिस तरीके से दबाए, मतलब देयर इज नो touch about his name at all in the see, I have not followed this Sushant Singh case from day one like how you guys have, but I am more interested in the common man's interest, which is not to get deceived by this Bollywood mafia which is peddling lies. Hinduism के बारे में इतना खराब इन्होंने lies peddle किया over the last 5 years. जितना आप history पढ़ोगे, I mean, I'm sure Vibhor and Varun you are doing your own fact checks about history, even from way 1000 years back. और जैसे ही आपको फैक्ट चेक होता है, सडनली आप रियलाइज करते हो ये बॉलीवुड की एक मूवी आ रही है, ये तो कुछ और उल्टा ही बताया जा रही है. Absolutely true. It's killing our narrative. जैसे आपने शायद किसी वीडियो में भी कहा था, it's the war of narratives. And by joining you people and by like I'm reiterating the Captain Ajit Wadakar's name because we are a war of narratives. इंडिया को कोई खाएगा तो अंदर से खाएगा, चाइना पाकिस्तान नहीं खाएगा. This is the यार मौत हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले सदियों से, हजारों सालों से हिंदुस्तान ही है, बाहर वाले नहीं है. बिल्कुल. मैं आपको इतिहास, आपने हिस्ट्री की बात की, आई हैव बीन एन एविड रीडर ऑफ हिस्ट्री. हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिट्रे इंडिया? फर्स्ट पर्सन एज इन वो हिस्ट्री में जाओ, 2-2.5 साल पहले, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे. अच्छा, मौर्य मैं तो पहला इंसान की बात करता हूँ. पहला हिंदुस्तानी कौन था जिसने हिंदुस्तान को बिट्रे किया था? नहीं, मैं तो जयचंद सोच रहा था, शायद आप वहां तक बात कर रहे हो. जयचंद तो उससे पहले, वो तो बहुत बात की बात है. हाँ, अच्छा. यार शकुनी कौन थे देश का राजा था? शकुनी तो वही है, अफगानिस्तान, गांधारी वहीं से आती है. गांधार का राजा था. उसने सबसे पहले भारत को बिट्रे किया जब उसने अलेक्जेंडर के साथ हाथ मिला के हिंदुस्तान पे, पोरस पे हमला किया. He was the first traitor of this country. Okay. तो हम हिस्ट्री की बात करें तो कभी एक हिस्ट्री पे डिबेट करते हैं वरुण.
व्हाट बिल्कुल इज बिल्कुल एक्चुअली हमें पढ़ाया गया आर्यन रेस आई ये आई बुलशिट। मैं बताता हूँ मेरी फैमिली जिस मैं कल अपने क्लैन की बात कर रहा था ये महक से ही, जो आपसे पहले आई हैं। वी आर फ्रॉम द क्लैन ऑफ पोरस। जी वी आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ पोरस जी हम लोग। और हमें बोला जाता है वी आर द आर्यन रेस। भाई माय फुट आर्यन रेस। बाहर से आए शादी की ये किया वो किया हमें तो क्रॉसेस बना दिया। या जी 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 अगर मैं अपने अपने वंश की बात करूं तो मैं सूर्यवंशी हूँ। और अगर मैं उस वे में और डीप जाऊं तो मैं सीधा सीधा शनि भगवान का भाई हूँ। गुड ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं कश्यप बिल्कुल गोत्र सही है मेरा। कश्यप कश्यप किसके कश्यप तो पिता थे? मेरा भी है सूर्य के। अच्छा हाँ हाँ अरे वाह फिर तो आप ही हमारे भाई हो। नहीं गोत्र सिस्टम इटसेल्फ लोगों को नहीं पता कितना जरूरी है हाँ कश्यप के बेटे थे सूर्यदेव, सूर्यदेव के बेटे थे शनि। और सूर्यवंश की सारे भाई बहन ही है। तो शनि शनि यम यमी यमुना सारे हमारे भाई बहन है। भगवान हम पोरस की उन्हें आपने मानते बात हैं। की पोरस की आपने बात की इन कैप्टन से ही अजीत वाडेकर से मुझे समझ में आया क्योंकि मुझे बार बार खटकता था जैसे प्लासी युद्ध खटकता है कि बार बार ये बोला जाएगा पोरस अलेक्जेंडर से हारा पोरस अलेक्जेंडर से हारा जबकि अलेक्जेंडर की मूवी में भी अलेक्जेंडर को हारते हुए दिखा दिया इन अ ब्रेव मैनर पोरस का नाम एक्चुअली में था पुरुषोत्तम और एब्सोल्युटली पोरस पोरस जो था वो एक मतलब खली टाइप आदमी था और अलेक्जेंडर एक्चुअली चूहा टाइप आदमी था लेकिन उल्टा दिखाया जाता है सारे नैरेटिव्स में अभी थैंकफुली कोई मूवी नहीं बनी है इंडिया में मतलब क्योंकि हॉलीवुड में झूठ बोलेंगे तो ज्यादा जोर की लात पड़ती है बॉलीवुड में कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को दैट इज व्हाई बॉलीवुड हैज टू गो और एब्सोल्युटली और लाइज इतनी बड़ी पेडल होती है ये पोरस और अलेक्जेंडर की इंडिया में इट्स टू अमेजिंग मतलब बोला जाएगा कि अलेक्जेंडर के पास घोड़े थे जबकि पोरस के पास हाथी थे जो फाइट करते हैं हाथी घोड़े थे। फाइट नहीं करते घोड़े क्या करते हैं फाइट नहीं करते हाथी फाइट करते हैं पुरुषोत्तम के पास डॉग्स थे ऑफ वेरी हाई हिमालयन ब्रीड्स एंड सो बेसिकली वरुण यही था कि बॉलीवुड ने जो पेडलिंग कर रहे हैं लाइज और मतलब कि ये हो गया था कि ये कहा जाता है कि डायलॉग मारा जाता है कि पोरस ने अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उसने कहा कि जो वही वही सलूक करो जो एक राजा राजा के साथ करता है। चल देखो छोड़ दिया। ये हमारा नरेटिव है ये हमें हमारा जो नैरेटिव सिखाया है जाता है। जबकि एक्चुअल में क्या हुआ था कि पोरस ने उसे घुसने नहीं दिया था बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर। वरना आज हम हिंदुस्तानी नहीं होते हम यमनी होते। एग्जैक्टली इतनी छोटी सी बात में समझ में नहीं आती हमारे इतिहासकारों को और हम लोगों को कि अगर पोरस उसको ना रोकता तो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी भी यमन हो जाते। वी वुड हैव बीन कॉल्ड ग्रीक्स। परफेक्ट ओके तो वरुण कहाँ टेक से हारा पोरस कहाँ से हारा पोरस और कहाँ से जीता अलेक्जेंडर मुझे बताओ ना। बिल्कुल 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 सो थैंक यू मोहित ज्वाइन करने के लिए थैंक बहुत यू सारे लोग वेट कर रहे एंड हैं मैं इस पे आज बोल के जाता हूँ कि एक दिन हम स्पेशल सेशन लेंगे हिस्ट्री के ऊपर। परफेक्ट परफेक्ट ऑलराइट अब तो मुझे परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल आज उसी पे मैं एक चीज और कमेंट देना चाहता हूँ एक कमेंट आया अभी फेसबुक पे मैसेंजर पे मुझे किसी ने भेजा है कि पीपल आर लिसनिंग एंड वो एक इस शो को एक और नाम देना चाहते हैं वीवा शो विभोर का वी आई एंड वरुण का वी ए अब उन्होंने वीवा शो बना दिया है सो Oh लोग my God. क्रिएटिव होते जा रहे हैं सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव Okay, so thanks to Vibhor and Varun. This is really nice. And I'm glad that you're doing this. From the last 2 to 3 days ago, I got to somehow got to see your show, and I'm really hooked up to it. And I'm since me and I'm keep telling my mom is here, so I'm keep telling her that this is the new update of the status for all the cases that you are taking care. And this is really eye-opening. The truth, what we know before was completely different. What you are sharing, and being as a professional lawyer, I'm very much sure that you are talking something that is on your about it. So this is all really eye-opening of
entire thing that the Bollywood is doing. My one question is, okay, why these people go after and murder these stars, like whether it could be like Shri Devi or Sushant. So like, what is the agenda like? They like for the money, for like ये सारा इसके पीछे है क्या? मतलब पैसा है या To कोई make a राज? statement, to make a statement, या आप अगर हमारे रास्ते में आए तो आपको रास्ते से हटा दिया जाए. Wow. Well, how can these people think that they're bigger than law? Like, कब ये जान जाते हैं कि हम इससे ऊपर हो गए? Can you repeat the question? Sorry, I'm getting a ये लोग multiple जो calls. कहते हैं कि तुम्हें रास्ते में आगे हटा देंगे, तो ये लोग कब ये जानते हैं कि हम तो कानून से ऊपर हो गए? प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश के कानून ने इनको इतना सपोर्ट किया है पिछले 60-65 सालों में that they thought that they are above the law. And this has changed now over the last 5-6 years. So another big relief coming to seeing your videos and your work, okay, the direct connection from like the government after this now in Sushant case or the CBIs in Mumbai right now, that no other channel is talking about it. It feels that our effort and our contribution is making a change out there. So it's good to know that, like Delhi is looking into this case and like how all the update is going to PMO office and like, so all this is really positive, which is only your channel is talking, nobody else is talking about. Just give us more motivation to stay connected. Cool. Thank you so much. Thank you for the support. All right, so these guys are the last ones. We are gonna wrap it up after this. Because I'm getting a lot of calls from all over the country. Right? All right, thank you so much, Rohit. All right, Poonamji, please go ahead. You I think have an appointment, so please go ahead. Okay. Yes. Hi Vibhor and hi Hello. Varun. Before you say, my mom's name is Poonam. Oh, how sweet. So we do have a spiritual connection after all. Absolutely. No, I have no questions because I just wanted to let you guys know that before any question crops up in my mind nowadays, आप लोग उसको answer कर देते हो. So I think that's a phenomenal thing you guys are doing. I am a hardcore SSRian, a die-hard fan, and I have been chatting a little bit with Varun online that life has not been same since 14th of June for some of us over here. And I have been very deeply impacted by whatever happened to Sushant. He was a bright boy with a lot of potential. He could have made a world of difference, not just in his own life, but I feel he could have done so much great work for the people around him, especially for kids, as he was so fond of them. And I feel it's a brilliant mind that we have lost because of the greed of some petty people, I think, who cannot even think or fathom to the extent, जैसे हम कहते हैं ना कि जहाँ उसकी सोच शुरू होती थी वहां पे जाके इनकी सोच खत्म हो जाती है. ये लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि what a life the world has lost. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, especially Vibhor. You are so fearless and I really applaud your knowledge, not just in law but also in scriptures. And I think Shiva, whom you, me, and Sushant was a big bhakt of, has personally chosen you for this mohim. And definitely, Varun, I want to applaud you that you're presenting such an amazing forum for everybody to come and express their views. And I just feel really lucky that there are people who are so selflessly working towards this cause without expecting anything in return. And we are all there with you. प्लीज ऐसे ही डटे रहिए, ऐसे ही लगे रहिए, सच्चाई एक के बाद एक दुनिया के सामने लाते रहिए. एक चीज मुझे मेंशन करनी थी जो पता नहीं कहीं डिस्कस की गई है या नहीं. आई वाज वाचिंग द मूवी केदारनाथ अ फ्यू डेज अगो फॉर द umpteenth टाइम एंड आई नोटिस दैट डेट्स में जो महाप्रलय आया था केदारनाथ में वो 14 जून 2013 में हुआ था.
And I'm very teary-eyed because every time I think about it, it gives me goosebumps that SSR's demise was also on the same day, 7 years later. I'm not sure what kind of an uncanny connection this has, but I always feel that he was God's special child and he was selected by Shiva to come on this earth to sacrifice his life so that it could be a whistleblower for all of these people who have, exploited other people and who have been exploiting the world, innocent people for their own greed. So we should not let his sacrifice go vain, and हमें definitely इन सब के जो नकाब है चेहरे के इनको हमें उतारना है. Absolutely. Looks like Vibhor dropped off, but this is a new fact. I think I haven't heard that, and this is the first time we are hearing it. And ये I'm मैंने sure. भी ऐसे I just happened to stumble upon those dates when I was looking at the subtitles, and I was like 14 June 2013. At least in the movie, that's the date that they have shown when the Shiv temple in Kedarnath, the whole big storm came. तो इनकी जो डिमाइस है ये एक स्टॉर्म की तरह आई है हम सबकी लाइफ में, और कोई तो रीजन होगा. बंदे की एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव है आई थिंक उसके जाने के बाद कि millions of people who've not even met him even once in their life. I personally went into 2 weeks of depression क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों इतना कनेक्ट कर रही हूँ. वो ट्रॉमा जो इस बंदे का पर्सनल लॉस मुझे अपने लॉस जैसा क्यों फील हो रहा है. Why am I feeling so affected by this trauma? Why am I so traumatized? But I have bonded with him so much more after he's passed on, because the way I have come to know him and his work, I have immense respect for the soul that he was. Wow. Poonam ji, I have no words. You left me speechless. Actually, I got a text as well from someone. They're saying, I'll just read it. It says, thanks. I'm literally disheartened right now. I'm not going to work. And you won't believe I mean it. Log is time ye cheez sun ke, I think a lot of us have, I have goosebumps right now. That really. I used to post. I am an avid movie watcher. I used to post regular reviews of movies from all over the world in all languages on my Facebook handle. I had people who were following me. They used to wait because I post very different kind of. I watch different kind of cinema. I post about it. जब से 14 जून हुआ है मैंने एक मूवी नहीं देखी है, न मैंने उसके बारे में लिखा है. मुझे ना कुछ देखने का मन करता है, ना किसी चीज के बारे में रिव्यू करने का मन करता है. I just don't feel like talking about movies anymore. All I watch and read and see is news related to Sushant. I have literally, मेरे को सब सहेलियां बोलती है कि तूने PhD कर दी है, बट जितना मैं और पढ़ती हूँ उनके बारे में, जितना मैं और देखती हूँ उनके वीडियोस, मुझे उनको और जानने का मन होता है, मुझे और उनको पढ़ने का मन होता है. I feel like he's a phenomenon. He used to call himself a photon in double slit, and he really is one. He's such a positive photon. And it kills me every day to know that such great talent is no longer there with us. And there are petty people who are still there, on the face of this earth, doing their thing. And I'm just waiting कि कब karma आए और उनको अपनी सजा मिले. It will. But thank you, love you guys for doing whatever you you're doing, and I'm going to keep tuning in as much as I can. Thank you. But thank you. Love you and love the board. Thanks. Thank you. Thank you so much. Thanks. Take care. Rohit, Take please care. go ahead. I think the board is off. So unfortunately, I don't think we can address any kind of questions, but yeah, please go ahead. No, first of all, Varun, how are you? Good. So right, yeah, I came to know that you haven't slept. So Varun, अब जो हम लोग की बात चल रही थी कि अब जिस हिसाब से मुझे पता चला कि अक्षय कुमार का नाम भी आ गया, जहाँ पे हम लोग बोलते थे कि पेट्रियट है और एक अलग तरीके से ये सारी फिल्में कर रहा है, ये कर रहा है, और बाद में ये पता चल रहा है, और यार बिल्कुल जैसे लग रहा है कि परसेप्शन बना के रखा है, इतना सारा PR का पैसा जाता है और हम लोग को लगता है कि कितना पेट्रियट है, ये है वो है, और असल में ये चेहरा है लोगों का अनबिलीवेबल गटर है, गटर
Exactly. गटर। और दूसरा ये कि ये जो लोग बोल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि प्रूफ दो चल रहा है। प्लीज इन लोग को बिल्कुल ध्यान मत दो। मोदी जी से भी पूछा गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसका प्रूफ दो, लेकिन देयर इज नो नीड एट ऑल। हम सब लोग आपके साथ हैं, सब लोग आपके साथ हैं। हिस्ट्री के बारे में अभी बात हो रही थी। एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग की हिस्ट्री में हम लोग को तो यही तो पढ़ाया जाता था बचपन में कि कितना कितना सेक्रीफाइस किया है चाचा नेहरू ने, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ये तो फिर इंटरनेट की वजह से हम लोग फिर पता चलने लगा कि क्या कैसे थे चाचा नेहरू और क्या करते थे। तो अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बस यही कहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू इट। और हम लोग देखते ही रहते हैं, भले 2 बजे 3 बजे 5 घंटे वाले में भी मैं था, पूरे 5 घंटा था। बात तो बिल्कुल लास्ट में मैंने मैसेज भी किया था। तो सब लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड है आप लोग से। प्लीज कंटिन्यू द गुड वर्क। Absolutely. Thank you so much. Thank you. Really appreciate. यही बस करते रहे आए, अच्छी अच्छी बातें भी करें ताकि we are always motivated. So and haters will always be there. So we understand. Yeah. Thank you. Okay. Bye. Thank you so much. हाँ जी, डिलोपा जी। हाँ जी सर, हाउ आर यू वरुण? गुड। पहले तो यार थोड़ी नींद ले लो, आपकी शक्ल से लग रहा है कि थकावट बहुत है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात जो एवरीबडी इज सेइंग कि हेटर्स विल ऑलवेज बी देयर, और आई थिंक half of the people want to believe you, but the reason they are not believing is, you know, they say that truth is stranger than fiction. तो अभी जो इतना सब कुछ बाहर आ रहा है तो कुछ लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है, एंड दैट इज राइट ऑन विभोर्स पार्ट कि जब ही स्लोली ब्रेकिंग इट आउट कि अगर एकदम से सब कुछ दे दिया तो ना तो किसी को, आधे से ज्यादा लोग तो बिलीव ही नहीं करेंगे। I know. राइट, सो दिस इज गुड। आप लोग जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, और प्रूफ जैसे विभोर ने बोला कि प्रूफ जो कंसर्न एजेंसीज हैं उन्हीं को देना है, क्योंकि सजा भी वही देंगे। हमें अगर प्रूफ दिखा दिया हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। राइट, एंड देयर कुड बी सम मटेरियल एविडेंसेस ओवर देयर एज वेल व्हिच कुड बी टेम्पर्ड और व्हाटएवर। राइट, कुछ भी हो सकता है कि अगर चीज पहले उन लोगों को प्रिपेयर करने का भी मौका मिल सकता है। एनीथिंग कुड हैपन, सो इट्स बेटर कि इट्स डन एट द राइट टाइम। सेकेंड चीज जो एक्चुअली मेरा विभोर से क्वेश्चन था, व्हेनेवर विभोर कम बैक यू कैन आस्क हिम कि रविंद्र पाटिल जो कांस्टेबल सलमान के केस में था, उस बंदे के साथ जो कुछ भी हुआ, आई फॉलोड हिज स्टोरी इवन एट दैट टाइम। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, बट नाउ दैट एवरीथिंग इज ओपनिंग अप, कैन हिज केस बी रीओपन्ड एंड कैन विभोर डू समथिंग अबाउट इट? This is what my question was for Vibhor whenever he comes back, because that guy needs justice। कि हम लोग पुलिस को गालियां दे रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे पुलिस वाले ने कुछ करने की ट्राई की थी, लेकिन उसके डिपार्टमेंट ने ही उसकी ऐसी तैसी कर दी। और the way he died, if I don't know if anybody has seen it, seen his pictures, आप लोग गूगल करके उसकी पिक्चर्स देख लेना कि उसकी पिक्चर पहले कैसी थी और बाद में वो किस हालत में वो बंदा मरा। उस चीज को देख के ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई कंप्लेन भी आया, पुलिस के पास जाओगे, पुलिस अपने पुलिस वालों की नहीं है तो और किसी की क्या हेल्प करेगी? And if I'm not wrong, I think उसकी डेथ का रीजन शायद किडनी फेलियर या कुछ ऐसा बना के। he was suffering from TB। वो बंदा दो महीने तक he was in a mental asylum in Pune from what I have gathered from my research। और उसके बाद वो वापस मुंबई आया क्योंकि उसको असाइलम से भी निकाल दिया गया था, और वो मुंबई में रोड पे था। फिर वहां से आई थिंक somebody pitted on him और उसको उठा के एक सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दिया, एंड he died in over there। मतलब उसके एंड टाइम पे उसकी फैमिली भी उसके साथ में नहीं थी। So ये लोग जिस हिसाब से बेसिकली इट्स जस्ट देयर पावर, राइट, मनी एंड पावर, कि आप किसी का मतलब उसकी फैमिली से भी नाता तोड़ देते हो कि उसकी फैमिली भी उसको उठाने नहीं आती है वहां पे। So if Vibhor can do anything about it, that will be really great. And I think he will. And the last thing that I want to point out, I don't know if you guys have heard about Jofra Archer tweets. Jofra Archer is an
ही इज एन इंग्लिश क्रिकेटर. वो बंदा, उसके ट्वीट्स ऐसे निकल निकल के आते हैं. इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर पास्ट 2 and 3 years कि कोई भी मेजर इंसिडेंट अगर होता है तो ही हैज ट्वीटेड अबाउट इट एटलीस्ट 4 or 5 years बैक. तो अभी जब रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हुई तो उसके कुछ ओल्ड ट्वीट्स उठ के आ रहे हैं. वन इज फ्रॉम September 3rd, 2013, and he has tweeted, Riya complaining but more is to come. There is no context about it, but this is something that has been going on on social media. I've been following Jofra Archer just for this on Twitter. Okay. And then there is another tweet on July 16, 2014. Riya and Tissel. For people who don't know what Tissel is, it's एक तरह का फंदा होता है. Wow. So this is just for people who like to explore. मैं just point out करना चाहता था. I will. Jofra Archer, he's an English cricketer. और उसके ट्वीट्स निकाल के अब मैं उसके सारे ट्वीट्स खोल रहा हूँ कि हो सकता है बाद में पता चल जाए कि कितनी जल्दी सजा मिलेगी. तो हमें जरूर बताएं फिर. या बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much. Thank you for sharing. I'll take your question with him. Yeah, all right. Okay. Last 5 minutes, guys. So yes, Ahir, I hope I'm pronouncing it right. Hi, good evening to everyone. Good evening, Varun. Yes. Am I audible? Yeah, okay, thank you. Good evening, everybody, and also to Vibhor, who's not here, but I'm sure he's going to watch this later. Guys, I just want to just say that you're doing a fantastic job. I think आप लोग real heroes हो. हम लोग जिस हीरोज को वर्शिप करते हैं और मूवीज देखते हैं वो हीरोज नहीं है, वो सिर्फ पर्दे में हीरोज हैं. आप लोग रियल हीरोज हो because I think what you guys are doing is extremely risky. At the same time, you don't know what's going to happen later on, where this is going to take you guys, but you all are still doing it. More power to you. I mean, I'm seriously really, really grateful that this is happening because honestly, I'm a vocalist and I've been in the industry since 2005. I did take a sabbatical in between and now I'm making a comeback. So I did have a little bit of an exposure with the music industry in Bollywood. And there are thousands and lakhs of people coming in every day to Mumbai to fulfill their dreams. And I think it's extremely important for the country to give us that opportunity. For all the artists, musical industry mein ho ya actress banna chahti hain ya whatever, whichever industry, I think everybody has that right to have the equal opportunity to make it big and fulfill their dreams. So I think ye bahut zaruri hai. This exposure is very important, but as a citizen of the country, I think hamara एक responsibility होती है, which I want to put it out in front of everybody today because there are so many people watching. We express our emotions, we talk about it, we congratulate everyone, and then it's forgotten. So I think it's everybody's individual responsibility to ensure that awareness is created. Isko band nahi hona hai. We need to create awareness. We need to keep the noise going. We need to ensure कि जब तक justice नहीं होती है, तब तक we should go on and on and on and on and on talking about it, creating awareness around it. And honestly, I don't believe in anybody saying कि हम लोग बॉलीवुड को बैन करेंगे, हम लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट करेंगे. जब तक उनकी मूवीज रिलीज नहीं होती है और हमको बॉक्स ऑफिस हिट्स नहीं दिखती है, तब तक मैं बिलीव नहीं करूंगी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस रिजल्ट से पता चलेगी कि कितने लोग सच बोल रहे थे जिन्होंने इतने नारे लगाए कि हम मूवीज नहीं देखेंगे, हम इनको बॉयकॉट करेंगे. बट एक्चुअली क्या ये होगा? This only time will tell us, because we all need to unite today, because only we can change this. We have made these people our heroes. We have brought them to a platform, and it is our responsibility to ensure that this noise keeps going. Because जब तक ये noise चलता रहेगा, जब तक हम इसका responsibility लेते रहेंगे, तब तक I think this will probably unmask. And exactly. Yeah, so that's what I feel. तो हम लोग सबको ये भूलना नहीं है. It's not only about Sushant, it's about the people who died before Sushant. It's about the people who probably might suffer in the future if we don't put our step down today.
people like me, people like maybe so many girls, so many artists all over the world. So ये बहुत ज़रूरी है, and I thank both of you to do this. Y'all are real heroes. मुझे लगता है कि worship आप लोगों को करना चाहिए. You know, we guys should bring you guys and give you that respect, because you guys are the main heroes. I don't want to take names, but I really don't have any respect for people Everybody, who are just all the trying to. SSRians are the heroes. अभी इस time अगर Yeah. सारे नहीं जुड़े होते, this would not happen. Thank you so much. And Yeah, I have a news yeah. for you all. The Mumbai is boiling hot right now. 16 calls in last 5 minutes from Mumbai itself. It is boiling. And अगले 24 घंटों में बहुत कुछ होगा. I assure you that. Here we go. I keep my fingers crossed. It's not like So I'm asking people to get into trouble. whenever I go offline, समझ लो कुछ हो गया. आज तो समझ आ ही रहा था विभोर, तो बार-बार जो हो रहा है, you know, again I don't want to be vocal about it, but लग ही रहा था कि आज अभी शुरू हो गया कुछ तो. So, but now we just Thank have you. 2 more minutes, guys. We just have 2 more Yeah, minutes. So yeah, because I have a lot of calls to attend today. yes, please. So just 2 more minutes. Let's Thank make you it. so much. I don't want to Thank take much of your time. Salute to you guys. More power to you, and have a great day. And thank you, all of you. You guys, everybody, have a great day. Bye bye. Vishal ji. Hi, Varun, Vibhor. Hello ji. Hello ji. Yeah. So first of all, thank you so much for prioritizing my video chat today. I have quick questions. As you said that, you know, there are a lot of emergencies that you have. So first of all, Varun spoke about the naming the show. I think we should name the show as Devil's Diary, the Viva show, because the kind of revelations you guys do are quite, you know, surprising. And, you know, I think Devil's Diary will be the perfect title for your exposures that you're doing. So this is one. I'll quickly ask you the question. So I think you mentioned about a lot of, you know, front end actors. So, but what about music industry? Do you think that all of them are also involved in this? Varun and Vibhor? Absolutely, a lot of them are involved, and in coming days, a lot of them would be named and shamed. मैंने कहा ना वैशाली, किसी को नहीं बख्शना. मुझे सीधे सीधे सी इंस्ट्रक्शन है, किसी को मत बख्शियो. Don't spare any single bastard. Okay. My quickly second question, Vibhor, I think, you know, you might be getting a lot of calls from new channels as well. So you, I think, mentioned something about because of the Nirbhaya background, you don't want to go or something like that. No, they won't. They don't want to call me because of that background. Okay, okay. Because, you know, once you go there, I think, you know, the kind of revelations you do, and you also have proofs with you, I think this will be much faster. But I know that there will be some complications around the national television and all. उनका चैनल बंद कर देंगे वो लोग. नायक पिक्चर देखी थी ना, तोड़ फोड़. Yeah. वैसे ही हो जाए. Okay, okay. So these were my questions. Thank you so much for you know, bringing me to the show. Thank you. Sure, thanks. All right, go ahead, Sumit. Sumit Zalpuri. Hello, can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, absolutely, absolutely. Okay. First of all, I would like to say I am thank you to Vibhor and the other guy. Varun. वरुण सॉरी मैंने कल से आपका ये चैनल देखना स्टार्ट किया एंड आई हैव बीन फॉलोइंग सुशांत फ्रॉम द डे वन एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जब से ये चीज चल रही है इट्स अफेक्टिंग मी अ लॉट एज अदर पीपल आल्सो सेड इट्स अफेक्टिंग देम बिकॉज ऑफ द रीजंस हाउ गुड ही वाज व्हाट ही वाज डूइंग फॉर द सोसाइटी मैंने बहुत सारी चीजें देखी उसकी जो हाउ ही वाज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी हाउ गुड एक्टर ही वाज व्हाट आर हिज उसके जो इंटरेस्ट थे कितने अच्छे थे उसका थॉट प्रोसेस कैसा था वो कितना इंस्पायरिंग था सो ये सारी चीजें जो एक्चुअली दैट्स द रीजन हम सब कनेक्टेड हैं और आपको देख के कल से मैंने आपका चैनल देखा और आपको देख के लगता है कि एक्चुअली अभी भी इस दुनिया में अच्छाई बची हुई है
सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। आपको आपको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है कि एक्चुअली सुमित आप जैसे सुमित लोग हैं सुमित जो सुमित 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 डू यू हैव अ क्वेश्चन? क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं, आई एम सो सॉरी। सर सर मेरे पास सिर्फ दो क्वेश्चन, क्विकली वन क्वेश्चन, और यू डोंट हैव टाइम। सर ये जो रिया का जो ये कैंपेन चल रहा है, जो पीआर चल रही है, रोज रेड वायलेट व्हाटएवर, सो आपको लगता है, क्योंकि समवेयर आई डू सी दैट ये सिंपैथी गेन कर रहा है, क्योंकि क्योंकि पीपल देयर इज अ डिमांड, दैट्स व्हाई यू नो ही इज कैटरिंग टू अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पीपल, राइट? सो लेट मी ये जो टेल यू पीआर लेट मी है टेल यू लेट या मी मैं समझ गया। बिकॉज सुमित यू हैव जॉइंड दिस चैनल yesterday ओनली। शायद आपको पता नहीं है कि ये मेरा रूल था कि कल से हम लोग किसी फोन के बारे में बात नहीं करेंगे। So we are not going to give any bloody importance which a person don't deserve. Let us talk about the big shots. Aditya Thackeray, Salman Khan, Arbaz Khan, Akshay Kumar. Let us name them now. Riya, Sandeep, I don't want to talk about them. I don't have time to waste upon these on. So sorry. Go. मेरा Sure. Okay, I think thank you. Thank you so much. Thank you so much. sure. Yes, Prabhat, please go ahead. Hello, Varun. Hi, Vibhor. ये सीआईडी के दया साहब नहीं लग रहे? अच्छा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है. Yesterday I just saw one news. Can you guys hear me? Yes. Please go ahead. So I saw think one Vibhor is news getting close. which was from Smriti Irani, which says government is working on most stringent law possible on trafficking of women and children. Is this some kind of a stage setup, or this is like It is a kind of a hint that no one would be spared. As simple as that. That's nice. Thank you. Cool. Thank you. All right, last one. Ritika, please go ahead. Ritika. Hi. Please go ahead. नमस्ते फ्रॉम बैंगलोर। आपको ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हूँ और सो भी नहीं पा रही हूँ इंडिया टाइम की वजह से। विभोर एंड वरुण, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बिकॉज यू आर डूइंग दिस। आई विल क्विकली जंप ऑन। I am in India. I am only in India. Don't worry. I am not going anywhere. I am not that lucky as I am not as lucky as Varun. बेटा लकी कौन है? बाद में बात करेंगे, we'll talk offline. Go ahead. टॉपिक टच करने क्विकली। फर्स्ट इज अराउंड ब्रांड्स, सेकंड इज अराउंड द प्लेटफॉर्म्स एंड थर्ड इज अबाउट हायरिंग इंडस्ट्री जो इनको हायर करती है। तो आई क्विकली टेल अबाउट माई सेल्फ। आई एम ऑल्सो इन द टेक वर्ल्ड। आई आई एम अ कोडर, सो आई हैव वर्क वेरी क्लोजली विद टेक जायंट्स इन बैंगलोर। तो जनरली सारे ब्रांड्स का ये होता है कि उनके मोस्टली सारे टेक ऑफिसेस बैंगलोर में होते हैं, उनके मार्केटिंग ऑफिसेस सारे मुंबई में होते हैं। तो आई वांट टू लर्न कि is there a way that you can make a task force in Bangalore which I can join or even lead, because I work on similar subjects. Varun, you needed her. मेरे को तो आप इंटर्नशिप दे दो, मुझे चल जाएगा, because I have worked very closely with these tech brands inside. So no, we were talking today only. Let me tell you all. We are looking for tech guys. We are looking for video editors. We are looking for all sort of technical guys. तो kindly contact and परेशान करो वरुण को। बिल्कुल। Sure. I would love it. हमें चाहिए। Okay. क्योंकि हमारे पास इतना लोड है, हमारा लोड थोड़ा ले लो यार, हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। बिल्कुल। So thank you so much for coming here. Thank you for giving the platform in the first place. So first thing is कि इनका जो भी मनी का एंगल है उसको काटना पड़ेगा, so we'll have to pressurize brands. Second thing is सारे OTT platforms के tech offices बैंगलोर में हैं, so we can definitely do something about it. क्योंकि बिल्कुल निर्लज्जता की हद हो गई है। I hail from MP और अभी आल्ट बालाजी में, मतलब मुझे तो लगता है आधा वो पॉर्न शॉप बना दिया उस चीज़ को, इतना गंदा कंटेंट है उस पर। और अभी वो अहिल्या देवी जो हमारे लिए माता जी भगवान के बराबर है एमपी में लोगों के लिए, उनके नाम पे बहुत डिजास्टरस उन्होंने किया है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड, इज देयर अ लॉ दैट वी कैन
ब्रिंग इन फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहाँ पर तो कोई बिना रोक टोक सब कुछ चल रहा है, सब गंदा कंटेंट है That एंड is a very good idea, Ritika. Ritika, that is a very good idea, and I assure you that I would be working on it. Thank you so much. I would, work for you. Please, Meko, treat me like an intern. I have a good years of experience in IT, so I would love to do that. Third thing is hiring industry. Like मेरे से पहले जो आए थे, जो सिंगर इंडस्ट्री में सिंगिंग और म्यूज़िक की इंडस्ट्री में बात कर रहे थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है. मेरा एक फ्रेंड है who is of my age. He sang in 2 or 3 मराठी फिल्म in Mumbai, and उसके साथ भी हालत बहुत खराब है. Because the way they hire, they fill you up with themselves. बहुत बड़ा कट खुद के लिए ले लेते हैं, तो उस बेचारे को अगर एक कॉन्ट्रैक्ट 25 लाख का होता है, तो उसको उसमें मुश्किल से 5 या 6 लाख रुपए मिल पाता है. बहुत ही दयनीय स्थिति है. एंड उस टाइम पर उन लोगों को लगता है कि यार हमने भी इंजीनियरिंग कर ली होती, हमने भी टिपिकल प्रोफेशंस कर लिए होते, तो हम अपने पैशन के पीछे गए और हमको मिसयूज किया जा रहा है. एंड सेम दे गेट कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एंड मूवी माफियाज एंड ड्रग पार्टीज एंड व्हाट नॉट. एंड ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने मतलब गुरु शिष्य परंपरा में प्रॉपर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को यूज मतलब सीखा है प्रॉपर 12-12 साल की तपस्या में. एंड आई फील सो बैड अबाउट दैम कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्या? मतलब हम ब्रांड्स को फोर्स नहीं कर सकते, हम OTT प्लेटफॉर्म को बैन नहीं कर सकते, और हम इनकी हायरिंग पे भी डिसाइड नहीं कर सकते, विच कंगना रनौत वेरी वेरी कि इतने बड़े बड़े 20 करोड़ 40 करोड़ के, लाइक दीपिका है साइंड विद I think Vibhor has to leave. Or he definitely has to. He has to. Sure. So let's connect offline, Ritika. I would say let's connect offline, and then मेरी details सारी public है, so you can WhatsApp me or you can call me. ठीक है? All right. Sure, thank you. Talk to you later. All right. देव पाजी, बड़ी देर से आप हाथ जोड़ रहे थे. Please ऐसे आगे से मत करें. I have been criticized a lot, and I really request everyone, please don't do that in front of me. I am not the sweet guy. I don't want to be the sweet guy, but मुझे करना पड़ा, तो आप please go ahead quickly. हाँ जी, हाँ जी. आपको मेरी आवाज आ रही? Yes. अरे क्या बात है. विभोर, आपके बारे में तो मैं बाद में बोलूंगा, पहले मैं वरुण के बारे में बोल दूं. भाई यार, ये बच के रहियो, पहली बात तो. इतना इतना जो आप सब धमकी कुछ तो चल नहीं दे रहा रहे? है, तो आप लाइफ में देखो, धमकी तो नहीं दे रहे? नहीं नहीं, ये साली शेव कराने का नहीं टाइम मिल रहा है यार तुम्हारी. ये सुन सुन के मैं तो शेव ही नहीं कर पा रहा. अच्छा, वैसे जॉब से मैं ऑडिटर हूँ और ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हूँ. Okay. और मेरा नॉर्मली 16-17 घंटे काम होता है नॉर्मली. लेकिन जब से तुम्हें सुनने को अब तो मेरे को ना शब्द भी नहीं आ रहे. मैं आई एम एक्चुअली प्रीटी गुड when it comes to that's my job to talk anyhow. तो भाइयों, सबसे बड़ी बात, और बहन जी, सबसे बढ़िया बात जो लगी ना भाई, तुम लोग ना दिल से बोलते हो. मेरा ना जी खुश हो गया. पता, मैं हरियाणा से हूँ वैसे, कुरुक्षेत्र. और मतलब विभोर साला ऐसा बंदा ना, जमाना हो गया, मजा आ गया भाई. ना ना, ये तो हाथ तो मेरे को जोड़ने पड़े भाई. मैं आज तो मैंने कहा यार 2.5 घंटे आज हो गए, 5 घंटे कल हो गए थे. मैं तो ये तो बुरा हाल हो गया. अब काम भी करना है. मेरी ना ये ऑडिट रिपोर्ट पड़ी है इतनी अपने डेस्क पे रखी. मैं अब तुम जाओगे, अब मैं अगले 3 घंटे अपना काम करूंगा. तो लेकिन नहीं भाई, मजा आ गया. और सच्ची में मतलब तारीफ कुल करने के लिए नहीं, मैंने सोच लिया था कि आज तो और सच्ची में जैसे सब बोल रहे हैं कि कंसर्न है, सच्ची में कंसर्न है. खास तौर पे देख भाई, मुझे लगता है कि इसका तो तगड़ा लट है, विभोर का तो है. तो इसके इसके इसको देखने वाले भोलेनाथ बैठे हैं. वैसे तो तेरे क्या बताऊं वरुण, सच्ची में यार. और जय भोलेनाथ के लिए बोलने के लिए बैठा था मैं तो, सच्ची बताऊं.
क्या बात तो है। बस बस बस, और जैसे परिवार बढ़ रहा है ना, बस ऐसे ही बढ़ता रहे। एक जेन्युइन क्वेश्चन जरूर था विभोर कि भाई व्हाट इफ दे फ्ली, खास तौर पे जो बिग फिश हैं, इनको उड़ने में टाइम तो नहीं लगेगा। जिस तरह से अब चाहे डार्क वेब लगा लो, चाहे कुछ लगा लो, तो इनको पता तो है हर एक मूवमेंट का तुम्हारी। तो जैसे तुम्हें पता है, ऐसी बात नहीं है, में दोनों पार्टीज बहुत स्ट्रांग है, ठीक से है ना। तो मैं यार, लग रहा होगा मैं सीधी बात करता हूँ, मेरे को ना बना के बहुत बोलना आता नहीं। और बेहतर है मैं अपनी मातृभाषा में बात करूं। वैसे मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, हिंदी बोले बहुत टाइम हो जाता है, सारा टाइम अंग्रेजों में ही रहना पड़ता है, पीसना पड़ता है। तो एनी हाउ, जो मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं कोशिश करूंगा हिंदी खूब ढंग से बोलूं। तो उसमें ये कभी भी उड़ सकते हैं या क्या, कोई रोकने रोकने वाला बैठा नहीं। तो कुछ है प्लान, गेम प्लान है। आई नो यू कांट मेक इट। क्या है? बोलो बोलो यार, मजा कुछ चल पकड़ के वापस, कुछ चल पकड़ के वापस। वाह जी, भाई साहब मेरे पापा करनाल में बैठे हुए हैं, मैं भी आता है यार। भगवान नहीं निकला रहा है। तो जब आपने बोला ना, तो आपने बोला ना लट है इसकी दोनों, तो खड़ा तगड़ा लट। हाँ, तो जैसे भाई तेरा नाम देव है ना, मेरा नाम भी देव ही है। आपको पता है, याद है आपको? बस मैं मेरा बहुत ठीक है भाई, मैं बात करूं, लेकिन हालत तुम्हारी भी इतनी बुरी हो जाती है कि सच्ची में तरस आ जाता है। मेरे को पता है कि नींद की कितनी वैल्यू है। मैं पिछले 10 दिन से 2-2 3-3 घंटे सो रहा हूँ, और भूतों वाली हालत हो जाती है काम पे। आज भी सुबह 2 बजे उठ के मेरे को ऑडिट करने जाना था मैन्युफैक्चरिंग साइट पे। हालांकि तुम्हारा प्रोग्राम देख के और बस नहा के सीधा वहीं पे चला गया। पर एनी हाउ यार, मतलब ना बहुत बहुत ऐसे आशीष निकलते हैं। मैं ये बात शब्द यूज कर सकता हूँ क्योंकि मैं 4 साल बड़ा हूँ विभोर से। अरे भाई ना यार, क्यों बस इकट्ठे ना, आवाज नहीं आ रही। मैं यूं कह रहा हूँ, आशीर्वाद दे दो छोटे भाई ने। ना आशीर्वाद बाना, बोलना देते हैं, देख के वो बाबा बोलना सब ख्याल देते हैं। और वरुण भाई, मुझे नहीं पता सवाल के रूप में मैं इंतजाम करेगा आपके लिए भी थोड़ा सा ध्यान से, और क्योंकि इनका कुत्तों का कुछ नहीं पता। बिल्कुल जी। हाँ भैया देख है भाई, ना, सीधा बोलने वाले बंदे हैं हम। ये है ना विभोर है ना, ये अपने आप देखेंगे। जब इन्होंने बस 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 ये बस चैनल बस बस। खोला है तो अपने आप सब कुछ अब इनके भरोसे चल रहा है। भगवान का नाम ले लिया हमने, अब तो और जय माता दी। बस हमारा तो भाई मैं भी यही सोच रहा था यार, इसमें ना खून तो कई हरियाणवी का ही होगा, क्योंकि ना औरों की लड़ाई में पुंजड़ ना हरियाणवी जड़ा। जी ठीक है खुश भाई, हो गया भाई, मजा आ थैंक यू, गया। मजा आया, मजा आया आपसे मजा बात करके भाई। थैंक यू सो मच। और सबसे बाकियों से आई अपोलोजाइज गाइस, कहीं आके तो हमें इसको स्टॉप करना ही होता है, तो आई रियली अपोलोजाइज। अब हम कल बात थैंक करेंगे, आज और नहीं हो पाएगी। थैंक यू सो कल मच। शाम 8 बजे। जैसे मेरा बेटा रुद्रांश बोलता है, मैं उस तरह से सेशन का एंड करना चाहूंगा। जय श्री राम, जय जय भोलेनाथ श्री, की, जय जय माता श्री, की, पवन सुत हनुमान की जय, जय। जय। सही बात है। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। मजा आ गया। बाय नाउ।